She's her calm. Take Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon to each and every one. Welcoming you from the sports field of MET Sports Ground Sopor, which is hosting Kashmir Bar Association's Cricket Cup. And it is the second match of the day. Srinagar staff, they are taking on Bar Association's Pulwama. We already had the first game of the day where Srinagar took on Pulwama, and Pulwama have won a quite comprehensive game against District Association Srinagar. And this is the second game, bringing you the live and exclusive coverage on Global News Network. And at this stage, Srinagar staff have decided to bat first. It is Sheikh Imtiaz and Zubair Ahmed out there in the center, starting the proceedings for Srinagar staff. And as Bandipora, they are fielding first, and it is very never number 1 Mudabbir Nazir, but has caught the ball in hand and is operating from the commentary box. And very never number 1, and they have 2 runs on board without loss. A couple of wides as Nazir goes once again. Good line, good length this time, just outside off, tries to drive the ball on the up and gets beaten. The ball goes into the gloves of wicketkeeper. First over in progress. Remember, it's Kashmir Bar Association's Cricket Cup being played at MET Sports Ground Sopor, and the second game of the day. And Srinagar staff are taking on Bar Association's Bandipora. Bar Association is Bandipora bowling here. There is Srinagar staff. They've been opted to bat first at 2 without loss. DK Dar is the first viewer. He is watching us from Sagam, Kokarnak. Thank you very much, brother, for joining us. And we're still in the first over of the game. Mudabbir Nazir goes over the stumps onto the pads and gets the leading edge, rolls down to third man. Wicketkeeper tried his level best, and he was just diving to the ball but cannot hold on. And in the meantime, it goes down as a dot. We are done with over number 1. An excellent over from Mudabbir Nazir, and 2 runs on board without losing a wicket. He was spot on. He was bowling with good control. As Srinagar staff starting their innings with couple of wides on board. They have 2 without loss, with Sheikh Imtiaz yet to get off the mark, has faced 3 bowlers. Zubair also not opening his account yet, is batting on, hasn't caught off the mark and has faced 3 deliveries. And you're watching the second game live and exclusive on Facebook, Global News Network. And in case you're tuning on to YouTube, JK Sports Discovery is where you can watch and enjoy this game. And in the meantime, Sheikh Imtiaz, Zubair Ahmed, in the meantime starting the proceedings for Srinagar staff at Bar Association is Bandipora, starting with a good first over. Nisar was bowling excellently well, but he conceded just 2 wides. And here is Zubair Wani, who's got the ball in hand, and DK Dar sending in his love. Thank you very much, DK Dar, for showing your 11 sport to share the live broadcast. First ball up the fresh over, and umpire raises his finger. First one down for Srinagar staff, as the batter isn't happy with the decision at all. Let's take a look at the replays. The left-handed start from over the stumps. It was a full pitch delivery. He was trying to work the ball on the onside, gets wrapped on the pad, and umpire obliges. Umpire says yes. And it is the first wicket for
Bar Association Bandipora. This is a fine start for them. Starting over the stumps, the left-hander traps the batter in front of the stumps. And umpire says yes, he raises his finger. Bandipora staff, they have lost the first wicket on just 2. It's early wicket for Bandipora Bar Association. They have struck quite early in just over number 2. They have got a wicket here. And it's 2 for the loss of 1. Sheikh has to depart. And Zubair Wani gets the first wicket of the day. He strikes early. And he looks very happy there after getting the first wicket. It is 2 for the loss of 1. A fine start for the left-hander. Of the very first ball of his spell, he gets rid of Sheikh there. He walks back to the pavilion. And now the new batter is just walking down the centre at number 3 as he gets ready to face Zubair. Onto the pad, is flicked away nicely. Good looking shot in the gap until the fielder goes, stops the ball. The batters have crossed it for 2 more runs. And with a couple, the score moves to 4 for the loss of 1. First runs on the board off the bat as the new batter Ishfaq Majid just gets off the mark with a single. Takes the score to 4 for the loss of 1. A good start for Bandipora Bar Association. As Zubair Wani has struck in the first over. And Srinagar staff losing the top order, losing the strike batter early on. Just 2, and Sheikh departs without troubling the scores. He departs on 0. In the meantime, Zubair gets ready. He's continuously operating over the stumps and bowling onto the pads once again. And easy pickings for the batter. Just turns it round the corner. Will get a single, and that single takes the score to 5 for the loss of 1. We already had the inaugural game of Kashmir Bar Association Cricket Cup, where Bar Association Srinagar took on Pulwama Bar Association, and it was a comprehensive win for Pulwama side. And now we got a second match coming your way live and exclusive on YouTube, JK Sports Discovery, and you can watch it on Facebook as well. And Global News Network now slips in a wide delivery, and that wide takes the score to 6 for the loss of 1. Second over is in progress. It has been a watchful start, but they have lost a wicket as well. In the meantime, Zubair Wani just pushes that one further up, tries to attack the stumps, and he pushes the ball back to the bowler. There is no addition to the total. There is no run at all. Second over, 6 for 1. And next ball, full toss, nicely played over the bowler's head, and will go down to the boundary for 4. Hits it straight down the ground. Nicely played over the bowler's head, mid-off, had no chance at all. And the ball runs away down to the longer boundary for 4. First boundary off the bat. And first boundary. First runs on the board with the bat of Zubair Ahmed as he gets off the mark with the boundary. Zubair slipping in a full toss delivery as the batter drives him nicely. Mid-off was inside the ring. He had no chance at all, and the ball runs away, trickles away into the fence for 4. 10 for the loss of 1 as Sheikh is back into the pavilion. In the meantime, Zubair, after 1.5 overs, score is 10 for 1, has conceded 8 runs, has got a wicket as well. As he goes for the final time, full toss again. That's a bad delivery, and this has been smoked away on the onside. 1 bounce and into the mid-wicket fence for 4. Again slipping in a full toss delivery. Bad bowling this from Zubair, and easy pickings for the batter. He just picks the length quite early, sees the full toss, and all he needed to do was just put the ball in the gap with fielders inside the ring. That was a safe shot to play. Gets it down to the boundary for 4. 14 for the loss of 1. Tariq Wani, walaikum salam, is watching from Dengue Bacha. And in the meantime,
And nonetheless, Zubair Wani has scored a wicket, but he has conceded 12 runs as well. Back-to-back boundaries being conceded in his first of those final 2 bowlers. He gets 2 boundaries and keeps the momentum going, keeps the scoreboard ticking. And Nazir bowled a fantastic first over where he completely caged the batters and he didn't let the batters score runs quickly. And this one is in the air. Could be a chance. And he has taken a fantastic running catch. Not easy again as the sun. He was tracking backwards. He was pedaling backwards. And he takes it on the 3rd attempt. He juggled a couple of times there and completes a fine running catch as Ishfaq Majid goes back to the pavilion as well. 2nd wicket for Bar Association Bandipora. This is a good start for them, picking wickets up front in the power play, and they have got 2 of them. But credit goes to the fielder. All credit goes to the fielder there. He was tracking backwards, pedaling backwards, and he juggled a couple of times there, but at the end he just manages to hold on to the catch and completes it. A second one goes down, and it's 14 for the loss of 2 now. We're in over number 3. Mudabbir Nazir strikes. He bowled an excellent first over. He conceded 2 and comes back for his 2nd over. And of the very first ball, he strikes. That is a quality start. That is a fine start for Bar Association as Bandipora. And I can say some trouble, some discomfort and disaster and devastation for Srinagar staff. In the meantime, the new batter just walks down the centre, just makes his way down, and you're facing a difficult situation now. You need to bite the bullet. You just need to break the ice now. And fantastic start for Nazir, fantastic start for Bar Association as Bandipora. A new batter just arrives, it Uzair, and he faces the first ball. Good delivery. Starts with a fantastic outswinger and beats the bat. It was a defensive poke. He was just hanging his bat in air and he gets beaten. The ball goes into the gloves of wicketkeeper. Uzair Nazir is the new man while Zubair is batting on it. It is a good start, starting well, picking up a couple of wickets at the top. Mudabbir Nazir, but has conceded just 2 runs, has got a wicket. And Zubair Wani conceding 12 in the first. He got a wicket as well. All I can say, hitting the jackpot at the early stages of the game, getting 2 wickets. And I say, now facing the tough situation, you need to bite the bullet. It has been a heyday for Bar Association as Bandipora, getting a couple of wickets and putting on a show with the ball, putting on a good performance with the ball. As Mudabbir goes once again. Good stuff with the ball, bowling wicket to wicket. A great stuff this is. And completely stopping the run flow in complete command. We have witnessed them in this spell until now. Both the bowlers are bowling really well. Both the bowlers controlling it well. A disciplined line and length, and haven't let the batters to free their arms in case we have witnessed 2 fours until now. But those were 2 full tosses. Again gets wrapped on the pad and umpire isn't interested and overthrows, and it goes down to the fence for 4. They have conceded an overthrow here and it goes down to the boundary for 4. SB Live watching from Assam, Pirzada Shakil, and lots of love, brother, for you as well. Big shout out to you as well. A bit of tension in the dugout of Srinagar Star, but they need to break the ice by having a conversation. They just need to break the ice by contemplating on the things, batting well. As I said, they just need to bite the bullet at this stage and just bat with ease, just bat according to the situation, bat according to the merit of the ball, and think out of the blue. Just try to play some attacking shots as well. Just get a one good partnership for the team. Go with the swing and bat nicely out there. And to carry the day, you will have to carry the game nicely. You'll have to bat and bowl well.
You know the ball is in your court. You just need to take those decisions by yourself. That's what we call. You just call the shots out there and bat accordingly in case you lost 2 wickets quickly. Both the batters are back into the dugout and both the batters went back to the pavilion quite cheaply. So it's onus on Srinagar staff to bat deep and to get one good partnership for them and to stay a good score. They will be trying hard to get at least 150, 160, but for that you will have to bat really well as you lost 2 wickets and both the batters are back into the hut quite cheaply, and important partnership here will mean that they will be into the contest. The train will be back onto the track with both the bowlers striking well for Bar Association Bandipora. An excellent phase of play, an intriguing session of play going for them, and he starts with a full delivery outside off and the batter fails to lay bat onto the delivery, and he was trying to drive it on the up but no connection at all as the ball goes into the gloves of wicketkeeper. Very number 4, and we call it a good start for Bar Association as Bandipora. He kept to the batters in the hunt until now and no big shots being scored, and we'll leave those 2 full tosses. Rest of the bowling has been spot on. They have been controlling it well as Saddam goes once again, a full toss delivery, and the batter could have hit this one to any part of the ground but finds the fielder at mid-off, and there is no addition to the total. And at this stage there is a bit of pressure on the batters, not being able to get some big shots here, not being able to rotate the strike as well. It's not only you search for those big shots, you just try to get those singles, get those doubles, keep the momentum going, keep the scoreboard ticking along. It hasn't happened until now, nothing going good for them as the bowlers feeding them with dots. In the meantime, Saddam goes once again, a swinging ball onto the pad, swings it nicely down to the scallop fence for 4. That will do it, and that will do it nicely for you onto the pads and flicks that one away. Good looking shot, and it will trickle away down to the boundary for 4, and it takes the score to 22 for the loss of 2. We're in over number 4 of the first innings. Saddam Butt, he was bowling well with back-to-back dots, now slips one ball down the leg side, and easy pickings whenever you slip the ball, whenever you bowl down the leg, and these are easy pickings for the batter. He just places that one. All you needed to place was just place the ball in the gap. The placement was spot on, and the ball rockets away into the fence for तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका एसबी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 2 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं। 24 मजमूई स्कोर श्रीनगर स्टाफ का। जुबैर अहमद और उजैर नज़ीर जो है वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं श्रीनगर स्टाफ के लिए, जबकि बार एसोसिएशन बांडीपोरा की जानिब से सद्दाम बट जो है वो बॉलिंग मार्क पर है। बार एसोसिएशन बांडीपोरा और श्रीनगर स्टाफ के दरमियान यह दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी है। अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की रफ्तार को कम किया था, फुल टॉस गेंद और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल ऊपर से। गेंद 4 रन के लिए मैदान से बाहर जाती हुई। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से इस गेंद को खेला बल्लेबाज जुबैर अहमद ने। फुल टॉस गेंद थी और गेंद को खेला मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की जानिब जाती हुई 4 रन के लिए। तो 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 28-2 विकेटों के नुकसान पर। यह पारी के 4 ओवर मुकम्मल हो चुका है। 5वें ओवर का खेल शुरू होने को है। श्रीनगर स्टाफ का स्कोर 28-2 विकेटों के नुकसान पर। सद्दाम बट ने अपना पहला ओवर फेंका जिसमें कुल मिलाकर 10 रन आए। 10 coming off the first over of Saddam Butt, and after 4 overs going at 7 runs per over, 28 for the loss of 2. Excellent start for Bar Association's Bandipora. A fascinating session of play for them as they got 2 top order batters cheaply who were back into the pavilion or just resting in the dugout, and now up to Srinagar staff just bat well now
I need runs on board. This wicket is full of runs we have seen. It's an absolute belter. It's an absolute paradise for the batters. As a batting unit, you'll have to contemplate on the things. You'll have to regroup as a unit and play according to the situation of the game. Just go with the swing. You'll have to be dedicated in the batting department. You'll have to bat really well. As Advocate Bilal has caught the ball in hand to bowl the penultimator of the power play. Those are yet to get off the mark. Zubair has got a couple of fours. He's batting on 18, and more often we have seen him targeting those straight boundaries whenever it is pitched further up to the batter. And a nice little start for him, but he needs to carry the inning. Set for a big innings today. And in the meantime, wicketkeeper who is going to be right up to the stumps. He has got a gully in place there, a wideish fielder. He has got short third man who is inside the ring. I guess he. And in the meantime, he has backward up point and cover as on the offside, trying to save the single as he ball. A good delivery, attacking the stumps. That is what you as a bowler. Bowl tight lines and lengths and find a good spot in that good length area and force the batters mostly to play off the back foot. Shot of the fielder who was charging in from short third man. Fielders the ball on the bounce as the batters scamper through for a single, getting a single. And he finally is off the mark. Uzair Nazir it is, 29 for the loss of 2 with SB Live watching the game, and Ejaz Parekh. Walaikum salam, welcome to the live stream, Usman Ejaz. At this stage you're watching it live and exclusive from MET Sports Field Sopor, which is hosting Kashmir Bar Association's Cricket Cup, and you're watching the second game of the day of this mega edition, where Bar Association's Bandipora is taking on Srinagar Staff. Srinagar Staff batting first, are 33 for the loss of 2. A slight fluctuation in the network, but it will be sorted out. As in the meantime, Advocate Ilal has conceded a boundary. He gets ready once again, and over the stumps he. As the batter was just trying to defend it off the crease, he was just planting his left foot forward. He wasn't up to the pitch of the ball, gets beaten and goes into the gloves of wicketkeeper. 33. A careful start, a watchful start, and this one has been hit in the air, but ball, and a single in the meantime takes the score to 34. And the final ball of over number 5 coming up, and bowling it on to the pad as the batter just works it on the onside. Will get a single though. No, denied a single. 5 as well. 34 for the loss of 2. शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और श्रीनगर स्टाफ का स्कोर 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। एडवोकेट बिलाल ने 1 ओवर किया और उसमें कुल मिलाकर 5 रन आए और अब मुदब्बिर नज़ीर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। जुबैर अहमद 23 रन पर खेल रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया जुबैर ने और उजैर नबी ने 1 रन बनाया, 8 गेंदों का सामना किया। इम्तियाज भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज भट्ट। एसबी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ यहाँ पे जो है नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन इसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। श्रीनगर स्टाफ का स्कोर 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब मुदब्बिर अगली गेंद के साथ हवा में खेला गया स्ट्रोक और गेंद जो है 6 रन के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से इस गेंद को खेला बल्लेबाज जुबैर अहमद ने और 6 रन हासिल किए। इन 6 रन की मदद से स्कोर जो है बढ़ता हुआ 40, 2 विकेटों के नुकसान पर। जुबैर के बल्ले से आने वाला यह छक्का और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ श्रीनगर स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा। श्रीनगर स्टाफ और बार एसोसिएशन बांडीपोरा के दरमियान
दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी। अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के इस फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद जो है उनके सर के बिल्कुल ऊपर से होती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जाती हुई इस दौरान दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और दो रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42, जबकि जुबैर अहमद का इनफरादी स्कोर हो चुका है 31। 17 गेंदों का सामना किया जुबैर अहमद ने। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 31 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जुबैर, एक मरतबा फिर सामना करेंगे मुदब्बिर नजीर की गेंद का। मुदब्बिर पारी का छठा ओवर फेंक रहे हैं, इनफरादी तौर उनका दूसरा, बल्कि अगली गेंद एक मरतबा फिर ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलना चाहता, गेंद उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, बल्कि विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए और उनके ग्लव्स को छूने के बाद गेंद स्लिप की जानिब गई, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। छठे ओवर का खेल जारी है और छठे ओवर की आखिरी गेंद, अब चौथी गेंद फेंकेंगे मुदब्बिर नजीर, सामना करेंगे उनकी गेंद का जुबैर अहमद। जुबैर अहमद बॉलिंग मार्क पर है और बल्कि जुबैर अहमद स्ट्राइक पर है और मुदब्बिर नजीर जो है बॉलिंग मार्क पर है। मुदब्बिर नजीर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की ऑन साइड की तरफ खेलने की एक मरतबा फिर कोशिश, गेंद जो है बल्ले गालिबन बल्ले और पैड को छूने के बाद गेंदबाज खुद गए, अपने फॉलो थ्रू से आ गए और गेंद को फील्ड किया। ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन का आखिरी ओवर जारी है और कहा जाएगा कि श्रीनगर स्टाफ का एक अच्छा आगाज जो है उन्हें मिलता हुआ 42 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को हल्के हाथों के साथ ऑन साइड की तरफ मोड़ा, जब तक गेंद को फीड किया जाता। एक रन बनाने का मौका, दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ एक रन मुकम्मल किया। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। और फील्ड रिस्ट्रिक्शन के ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे, यानी छठे ओवर की आखिरी गेंद सामने है उजैर नजीर। उजैर के लिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब गई और एक रन इत्मीनान के साथ हासिल होता हुआ इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 हो चुका है। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। दिन का दूसरा मुकाबला श्रीनगर स्टाफ और बार एसोसिएशन बांडीपोरा के दरमियान इस वक्त जारी एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर। दोनों बल्लेबाजों के दरमियान 23 गेंदों पर 30 रन की शराकतदारी हुई है जुबैर अहमद और उजैर नजीर के दरमियान। इम्तियाज भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, उस्मान इजाज हमारे साथ जुड़े हैं, इजाज परे एसबी लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीरजादा शकील लगातार हमारे साथ दिन भर जुड़े हुए थे। इकबाल रब्बानी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 44 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर मुदब्बिर नजीर ने 2 ओवर किए, 12 रन दिए और 1 विकेट हासिल की मुदब्बिर नजीर ने। श्रीनगर स्टाफ का स्कोर 44। 8 टीमों पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट और देखना होगा कौन सी टीम जो है इस टूर्नामेंट की फातिहा टीम होगी। एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड इस टूर्नामेंट का मेजबान बन रहा है और 44 है स्कोर इस वक्त श्रीनगर स्टाफ का। बार एसोसिएशन बांडीपोरा के खिलाफ 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल। एडवोकेट बिलाल को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। एडवोकेट बिलाल ने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए थे, अब अपना दूसरा और पारी का 7वां ओवर फेंकेंगे। सामना करेंगे उनकी गेंद का उजैर नजीर, जिन्होंने 2 रन बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए। उजैर नजीर बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए और बॉलिंग मार्क पर एडवोकेट बिलाल बार एसोसिएशन बांडीपोरा की जानिब से। एडवोकेट बिलाल, छोटा सा रन अप उनका, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे। उजैर के लिए ऑन साइड की तरफ गेंद को मोड़ दिया है, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन इत्मीनान के साथ दौड़कर हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 45, 2 विकेटों के नुकसान पर श्रीनगर स्टाफ का। ओवर का खेल जारी है, एडवोकेट बिलाल बॉलिंग मार्क पर। एसबी लाइव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एडवोकेट बिलाल के ओवर की अगली गेंद और इस मर्तबा गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए, मैदान से बाहर जाती हुई। यह छक्का आया के बल्ले से और जुबैर अहमद लगातार जो है इस मुकाबले में बेहतर अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब श्रीनगर स्टाफ का 2 विकेटों के नुकसान पर जुबैर और 38 रन पर 30 गेंदों का सामना करते हुए।
अगली गेंद एक मरतबा फिर बिल्कुल उसी अंदाज में और गेंद मिड विकेट बाउंड्री को इस मरतबा छूती हुई 6 रन के लिए। एक और छक्का आता हुआ जुबैर अहमद के बल्ले से और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 57 हो चुका है। 57 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल जारी है और बॉलिंग मार्क पर है एडवोकेट बिलाल। एडवोकेट बिलाल का ओवर महंगा साबित हो रहा है बार एसोसिएशन बांडीपोरा के लिए। 3 गेंदें फेंकी और अभी तक 13 रन आए हैं। अगली गेंद के साथ उजैर सामना करेंगे, बल्कि जुबैर अहमद सामना करेंगे। एक और बड़ा स्ट्रोक और एक और बड़ा छक्का, लगातार छक्कों के हैट्रिक आते हुए जुबैर अहमद के बल्ले से। आप रिप्ले में देख सकते हैं ये तीसरा छक्का आता हुआ इस ओवर में जुबैर अहमद के बल्ले से और 44 बल्कि 50 रन भी यहां पे मुकम्मल होते हुए जुबैर के 50 रन भी जुबैर के मुकम्मल होते हुए और मजमूई स्कोर हो चुका है 63। 2 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल जारी। एडवोकेट बिलाल बॉलिंग मार्क पर, अभी तक महंगा ओवर जा रहा है एडवोकेट बिलाल का बार एसोसिएशन बांडीपोरा के लिए। 19 रन आए इस ओवर से अभी तक 4 गेंदों पर। एक मरतबा फिर जुबैर अहमद सामना करेंगे। सिर्फ 23 गेंदों पर 50 रन बनाए जुबैर अहमद ने। 200 से जायद का स्ट्राइक रेट जुबैर अहमद के पास। जुबैर एक मरतबा फिर जो है एडवोकेट बिलाल की गेंद का सामना करेंगे। एडवोकेट बिलाल छोटा सा रन अप, अंपायर को क्रॉस किया। इस मरतबा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए लगातार चौथा छक्का आता हुआ इस ओवर में जुबैर अहमद के बल्ले से। जुबैर अहमद का बल्ला आग उगल रहा है। एडवोकेट बल्कि ये श्रीनगर स्टार्स के लिए खेल रहे हैं और लगातार इस ओवर में जुबैर के बल्ले से आने वाला ये चौथा छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ 69। 2 विकेटों के नुकसान पर एडवोकेट बिलाल बॉलिंग मार्क पर है। अभी तक ओवर से 25 रन आए, अभी भी एक गेंद का आना बाकी इस ओवर में। मुदस्सिर मीर BMZ ग्रुप तरकपुर रफियाबाद से जो हमारे स्पॉन्सर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट बिलाल ओवर में आखिरी गेंद के साथ गेंद की इस मरतबा ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला है। देखना होगा एक और छक्का आता हुआ, एक और छक्का आता हुआ और 5 गेंदों पर 5 छक्के, मुसलसल 5 छक्के आते हुए इस ओवर में एडवोकेट जुबैर अहमद के बल्ले से। बड़ा महंगा ओवर, 31 रन आए एडवोकेट बिलाल के इस ओवर से और कुल मिलाकर 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 75 हो चुका है मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। He is just dealing in sixes in that previous over of Advocate Bilal, smashing him for 5 consecutive sixes, and 31 coming up the previous over moves to 62 of just 25 bowlers. A terrific ball striking, a fantastic ball striking now seen so far. And they lost 2 quick wickets in a quick time and cheaply the life, infusing life into this contest. 62 of just 25 bowlers, 5 sixes in a row in that previous over, and takes the score to 75 for the loss of 2. A 61 run stand between these two for wicket number 3 means they are straight, and there is more pressure on Bar Association's Bandipora. Hilal Ahmed, Mudassir Mir watching from BMZ Group Strakpura, the proud sponsor of Global News as well. As once again, may I remind you, Mansoor Decorations, Rafiabad, Al-Maida Bakery, Rohama, and BM. This live broadcast as problem is continuing for Bar Association is Bandipur after picking 2 wickets. Now the batters, now the bowlers are going for runs. The bowlers are leaking runs at will. And in the meantime, Zubair has proven to be a real entertainer with the bat. 5 sixes of 5 bowlers. And a bowling change. Mudassir Butt has scored a ball in hand and he goes to Uzair for the first time. And Uzair tries to on drive, doesn't time it well, gets a bit of inside edge. Rollers down to Scalag and both the batters will get a single.
and that takes the score to 76 for the loss of 2. A game-changing moment in that previous over where he conceded 31 runs, and it's brought them back into the game. Srinagar staff, they didn't start well, but more often if you don't start well, you have to finish it well. That's why we call you end it well, everything ends well for you. And Bar Associations will be itching there to get a wicket, a couple here, and to strike back into the contest. In the meantime, next ball cuts that one nicely, again beautifully finds the gap. A fumble there by the fielder, and in the meantime, until he tidies things up, I guess it has gone crossed the ropes, and here is the signal of the umpire. 4 more runs have been scored. A misfield there, and it lets the ball to trickle away into the boundary for 4. Runs coming really fast now, runs coming really thick now for Srinagar staff, as they are scoring 6s and 4s at will, and this one has been smashed away over mid-wicket boundary for a 6. A drag down, a half tracker from Mudassir Butt, and the batter just pounces onto the chance, and this has been absolutely smoked away over mid-wicket fence for a 6. Half a dozen as he hits the jackpot. Continue doing Panshir. This is who this is. 85 sir. 85. It is your lead. Lead है अच्छा नहीं? Lead है? मगर इन जो 10 मिनट बाद वापस गिश में याच में कंटिन्यू था वो नहीं अच्छा नहीं. This stage 85 for the loss of 2 as the ball is out of the ground. Bar Association is Bandipora. The bowlers taking the punishment now, and it is Uzair this time who line is up for the big shot, sends that one sailing into the stands, as the fielder there at deep mid-wicket was just a mere spectator at the halfway stage of over number 8. Now runs coming really fast, and all I can say, the runs are flowing like a water here, and both the batters batting with quiet ease, batting with positive intent, and putting all that pressure on the bowlers. The pressure which was created by the first couple of overs, it has eased down completely. In the meantime, next ball, and he was just trying to use the depth of the crease, doesn't get it off the bat, and gets beaten, and it goes into the gloves of wicketkeeper. A fine session of play going on for Srinagar staff as they are making their way, as they're crawling their way back into this game. As next ball lifts him down the ground, up in the air, and one bounce into the long on fence for 4. A tame effort there by the fielder, a lazy effort there by the fielder at long on. Could have been much better effort from him, but nonetheless he didn't go for the catch and even didn't save the boundary, as it goes one bounce into the fence for 4. It's absolutely pelting down those 4s and 6s now. 15 coming off the previous over, 8 overs gone, going more than 11 runs per over, 90 for the loss of 2. 90 for 2 after 8 overs, an excellent start, and batting with a great intent, batting with a positive mindset. Both the batters are just finding boundaries with ease. Both the batters are finding those boundaries at will. बस थोड़ा फर्क डालना नॉन स्ट्राइकर साइड. After the completion of 8 overs, Srinagar staff have done a fantastic job with 90 runs on board. Just 2 wickets which fell very cheaply today, which went back quite early. But this partnership nearly of 76 runs
and it is really pushing the side of Bar Association's Bandipur at the back foot. As 9th one begins from the com box, and I guess the captain has gone for the bowling change again. It has forced him to go for the bowling change, as both the batters are looking very dangerous. Explosive batting from Zubair, 76 he is, but it will be Uzair Nazir to face the first ball of the fresh over, and right is the bounce. Well, jumps on his toes and steers it down to back. A quick single, and we'll get a single, and that takes the score to 91 for 2. Here we've got Simran Khurshid and Hina Lon sending in love for Bar Association Bandipora. Adil Manzoor, and he is just sending in love for wicketkeeper. I guess it's Burhan. And now down the leg side, a bad delivery, a terrible ball, and the batter nicely helps it away down to the fine leg boundary for 4. No fine leg in place, and that's a bad delivery. You have that deep scare leg hits his way outside. He's just patrolling the boundary, and with no men inside the ring at the fine leg area, that was it was always asking for trouble. Just flicks the ball away into the fence for 4. Next ball. This one has been lofted away, and this is a biggie. That is huge and enormous as it goes out of the ground for a 6. Again overcompensating, bowling a slot delivery onto the pads. Just clears his left leg out of the way, and bang he goes for half a dozen again. And at this stage, Srinagar staff, they announcing themselves in style, and it is Zubair Ahmed once again sends the ball sailing into the stands. One more 6. Here is the next one, and he tries to swing it away, but no connection at all as the ball goes into the gloves of wicketkeeper. And this has been an exhibition of powerful batting. This has been an exhibition of glorious ball striking from Zubair. He is 82, and in the goes he goes once again onto the pad. Just works it on the onside. It's a fantastic game of cricket going on, and you can see playing those mind games just nicely and neatly pushes that one away on the onside until the fielder comes in, and a needless overthrow, and it yields 3 more runs, and it takes the score to 104 for the loss of 2 after 9 overs. And advocate A.R. Khan sending in love for Bar Association, mentioning Bar Association Bandipur are going to win the game, but at this stage they're going through a tough stage as the bowlers are leaking runs continuously. And Rising Arin is mentioning the same, that the bowlers have been punished and they are leaking runs continuously. It is Summer is admiring that 6, and but Zubair as well, and Rising Arin, no doubt about that. The bowlers leaking runs, the bowlers being punished. And in just over number 9 we have more than 104 runs on board and just 2 wickets. And you know, those 2 wickets fell in over number 2. After that, this partnership has completely sealed the show. Once again, a beautiful shot, punch off the back foot, and this is short of the match until now, as once again the ball trickles away fine and into the fence for 4. 108 after 9 overs. And Bar Association as Bandipora have got some problems now, serious problems, as they are not finding, they're not being able to pick up wickets. And at this stage, Srinagar staff absolutely enjoying and entertaining themselves. शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 108, 2 विकेटों के नुकसान पर श्रीनगर स्टाफ का स्कोर, और जुबैर अहमद 85 रन पर खेल रहे हैं। 33 गेंदों का सामना किया जुबैर अहमद ने, और बार एसोसिएशन बांडीपोरा के लिए जुबैर अहमद की विकेट कीमती होगी, और जितनी जल्द उनकी विकेट हासिल हो जाए उतना बेहतर होगा उनके लिए, वरना स्कोर बोर्ड जो है तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जानकारी देना चाहूँगा एमईटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड, जहाँ पर ये जो है 8 टीमों का टूर्नामेंट कश्मीर बार एसोसिएशन कप का इनेकाद किया गया, और 8 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इस वक्त श्रीनगर स्टाफ और बार एसोसिएशन बांडीपोरा का जो है मुकाबला जारी है एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर।
आदिल जान आए हैं बॉलिंग मार्क पर 108 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 85 रन पर खेल रहे हैं जुबैर अहमद, और जुबैर अहमद ने एक ही ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाए थे। जुबैर अब सामना करेंगे आदिल जान की गेंद का। आदिल जान अपना पहला ओवर फेंकेंगे, पारी का 10वां ओवर। आदिल जान बॉलिंग मार्क पर फील्ड सजाने में मसरूफ है, और ऑफ साइड पर कुल मिलाकर जो है 5 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात, 3 खिलाड़ी दायरे से बाहर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री, मिड विकेट बाउंड्री और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बॉलिंग मार्क से आदिल जान, 10वें ओवर की पहली गेंद जुबैर के लिए, हवा में खेला गया स्ट्रोक लेकिन महफूज, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। एक और छक्का आता हुआ जुबैर के बल्ले से, और जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया कि जुबैर की विकेट यहां पे अहम होगी, और बट जुबैर हमारे साथ जुड़े हैं, एडवोकेट AR खान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बार एसोसिएशन बांडीपोरा की टीम को जो है यहां पर जुबैर उनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। जुबैर जिन्होंने 34 गेंदों का सामना किया और 91 रन पर खेल रहे हैं, कुल मिलाकर उनके बल्ले से तकरीबन 9 छक्के देखने को मिले। जुबैर एक मरतबा फिर सामना करेंगे आदिल जान की गेंद का। आदिल जान को लाया गया था बॉलिंग मार्क पर तब्दीली के रूप में, और उनकी पहली गेंद पर 6 रन हासिल हुए। आदिल जान एक मरतबा फिर जुबैर सामना करेंगे उनकी गेंद का, जिन्होंने 91 रन बनाए। गेंद के एक मरतबा फिर हवा में शॉट, लेकिन इस मरतबा जो है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और तेजी के साथ स्कोर जो कार्ड जो है आगे बढ़ता हुआ, और जुबैर का इनफरादी स्कोर हो चुका है 97। सिर्फ एक स्ट्रोक दरकार उन्हें अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। उन्हें अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रोक दरकार। आदिल जान एक मरतबा फिर ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया जुबैर के लिए, ऑन साइड की तरफ पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, शॉट फाइन लेग से फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। तारिक अब्दुल्ला आलू साहब बांडीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं। आदिल मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। इट जुबैर लेफ्ट इन स्कोर आप बांडीपोरा जरूर आपको जानकारी देंगे। हिना लोन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल जान अगली गेंद के साथ, गेंद के इस मरतबा बल्लेबाज थे उजैर सामना कर रहे हैं, बट जुबैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आदिल जान 10वें ओवर की अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, गेंद की उजैर के लिए, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर गए रन के लिए दौड़ पड़े। इस दौरान दोनों बल्लेबाज और रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 121 हो चुका, 122 हो चुका है। अब 98 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं जुबैर अहमद। सिर्फ 2 रन चाहिए उन्हें अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। क्या इसी गेंद पर वो सेंचुरी स्कोर करेंगे? इस मरतबा गेंद को खेला पूरी तरह से, गेंद जो है बल्ले पर आई नहीं, अंदरूनी हिस्से को लगने के बाद गेंद को फील्ड किया गया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। 1 रन का इजाफा, तो 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर 123, 2 विकेटों के नुकसान पर 123 हो चुका है स्कोर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये समर हमारे साथ जुड़े हैं। ये मैदान जो है T20 क्रिकेट के लिए मवाफिक मैदान है, और बाउंड्री चारों अतराफ बिल्कुल बड़ी बाउंड्रियां है। एडवोकेट AR खान बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग आर्यन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप तक जो है जरूर प्लेइंग स्क्वाड जो है पहुंचाएंगे दोनों टीमों का। बिलाल अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं कुलगाम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बार एसोसिएशन बांडीपोरा और श्रीनगर स्टाफ के दरमियान ये दिन का दूसरा मुकाबला कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप का। आदिल मंजूर बहुत बहुत शुक्रिया, और ख्वाजा वसीम यूसुफ भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दस ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और श्रीनगर स्टाफ का स्कोर तेजी के साथ 123 है। 123, 12 से जायद की औसत से रन आ रहे हैं श्रीनगर स्टाफ के लिए। आपको दोनों जो है टीमों का प्लेइंग 11 इस दौरान पहुंचाएंगे जब तक पानी का वक्फा जारी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। बट जुबैर भी हमारे साथ जुड़े हैं,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जुबैर जो है मैच के हवाले से कुछ लिख रहे हैं। अभी पहली इनिंग है तो देखना होगा दूसरी पारी में बांडीपोरा का जो है बैटिंग लाइनअप कैसा होगा। एडवोकेट AR खान बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको जो है जानकारी ज़रूर मिलेगी, जानकारी ज़रूर मिलेगी आपको इस मैच में खेलने वाले दोनों टीमों के स्क्वाड की। आप बने रहिए हमारे साथ। हम जो है इसी कोशिश में है। या एडवोकेट AR खान बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और पानी का वक्फा है तो हमारे पास मौका भी है, लेकिन हम जो है इसी कोशिश में है कि प्लेइंग 11 जो है आप तक पहुंचाएं। लेकिन यहाँ क्रिक हीरोज़ जो है ऐप हमारा साथ नहीं निभा रहा है और ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो ज़रूर आपको जो है प्लेइंग 11 की जानकारी देंगे। ये कश्मीर बार एसोसिएशन कप का दूसरा मुकाबला। तो कुछ टेक्निकल इशू था, उम्मीद है अब बेहतर हुआ होगा। आप हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 जो है वो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, स्क्वाड आपका आप तक पहुंचाएंगे दोनों टीमों का। आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहले आपको जो है स्क्वाड आप तक पहुंचाना चाहेंगे श्रीनगर स्टाफ का। बशारत है, बनिया माजिद, गुलजार, इशफाक मजीद, नज़ीर अहमद, ऋषि फिदा, शेख इम्तियाज़, तनवीर अहमद, उमर नज़ीर। और बार एसोसिएशन बांडीपोरा में एडवोकेट बिलाल, आदिल जान, आमिर हसन, अब्बास अहमद, एडवोकेट बुरहान, एडवोकेट मुनीर, आसिफ इकबाल, मीर शब्बीर, मुदब्बिर नज़ीर, मुदस्सिर भट्ट, राजा और उनके साथ साथ सद्दाम भट्ट भी है। तो ये प्लेइंग 11 आप ज़रूर जो है उम्मीद है कि आप तक पहुंच चुका होगा। और यहाँ 100 रन्स मुकम्मल होते हुए जुबैर अहमद के बड़ी लाजवाब पारी खेली, आतशी पारी खेली, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और सिर्फ 37 गेंदों पर 38 गेंदों पर यह सेंचुरी मुकम्मल की जुबैर अहमद ने। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा जुबैर अहमद की जानिब से श्रीनगर स्टाफ के लिए। 39 गेंदों पर ये 100 रन मुकम्मल किए। मुदस्सिर भट्ट है बॉलिंग मार्क पर, पारी का 11वां ओवर फेंक रहे हैं। सामना करेंगे एक मतलब फिर उजैर नज़ीर उनकी गेंद का, जिन्होंने 10 रन बनाए हैं। उजैर के लिए गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला और खेलते ही दौड़ पड़े, रन मुकम्मल होता हुआ। लाजवाब पारी खेली जुबैर ने, 100 रन बनाए 39 गेंदों का सामना करते हुए। अब एक मतलब फिर सामना करेंगे मुदस्सिर भट्ट की गेंद का। जुबैर अहमद के बल्ले से गालिबन जो है 11 छक्के देखने को मिले और जुबैर अहमद ने एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए थे। मुदस्सिर भट्ट जुबैर के लिए ओवर द विकेट, गेंद की एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और बड़ा छक्का आता हुआ जुबैर के बल्ले से। जुबैर का बल्ला आग उगल रहा है एमईटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड में। 106 रन बनाए जुबैर ने और अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो है उन्होंने 106 रन बना साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहां जो है नाइस बैटिंग बाय जुबैर जी, बिल्कुल। और अगली गेंद को खेला हवा में, शॉट, फील्डर गेंद के पीछे बिल्कुल तैयार और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। आदिल मंजूर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और 11वें ओवर का खेल जारी है, मजमूई स्कोर है 131। 131, 2 विकेटों के नुकसान पर 11वें ओवर का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। 133 मजमूई स्कोर, तो 133 मजमूई स्कोर है और यहां 135 बल्कि 2 विकेटों के नुकसान पर मुदस्सिर भट्ट के ओवर से 17 रन आए हैं। तो कुल मिलाकर ओवर्स मुकम्मल हुए
11-135 स्कोर। अंदाजा लगाइए कि कितनी लाजवाब और जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा हुआ श्रीनगर स्टार्स की जानिब से। अगली गेंद को खेला, हालांकि पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। इस दौरान 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ एक रन के इजाफे के साथ 136। Absolutely breathtaking knock from Zubair Ahmed. 110 of just 42 bowlers. Drop dead gorgeous innings, and he is absolutely taking on the likings of the bowlers. He's just punishing them. Zubair will continue, and that is way down the leg side, will be called a wide, and there will be an additional bye as well. So 2 wides, and he takes the score to 138 for the loss of 2. And a partnership of 124 runs between these two. Adil Manzoor, absolutely, it has been a more than nice batting. Mohammad Amin Butt, and we have got Rising Areen and Advocate A.R. Khan watching and enjoying the game of Srinagar staff. Brilliant batting, absolutely, there is no doubt about that. He lost 2 wickets at the top, and then joining the party. He has hit at least 10 sixes today. A terrific striker of the ball, a powerful ball striker he looks, and the timing was spot on, and targeting that cow corner area more often. With a single, score moves to 139 for the loss of 2, and still a long way to go. Bar Association's Bandipora, they have conceded way too many runs. Short and wide outside off stump. This has been slapped away for 4. Short delivery outside off stump, and at this stage, well, I can say Srinagar staff are absolutely going ruthless, unstoppable. That was a short delivery, a half tracker wide outside off, as Zubair absolutely slaps that one fine into the boundary for 4. Moves to 114 of 43 bowlers. He is just looking wow with a bat, and unstoppable with a bat. A terrific century for a man, and came in a situation when they lost 2 wickets, and has delivered a box office blockbuster here. A masterpiece innings coming off his bat. In the meantime, a full toss, and this has been absolutely powered through mid-wicket fence for 4. And back-to-back fours now takes them to 147. Zubair moves to 118 after hitting a century. He is looking more dangerous, and he's looking more explosive, and he's just hitting the fence with fun. Next ball, and he taps it on the offside, will get a single, and that single takes them to 148. And can you believe it, we're just in over number 12, and after 4 overs the score was 16 for the loss of 2. So last 10 overs have yielded nearly 130 runs, and without losing a wicket. And remember, this is the partnership of 134 runs, and out of those 134 partnership, only 13 runs have been scored by Uzair of 20 bowlers. And look at the dominance with the bat by Zubair, and they are going absolutely hammer and tong. As Bar Associations Bandipora, they need to find those ways of picking wickets, in a desperate need of breaking this partnership, in a desperate need of a wicket here. Otherwise it could be a mammoth score on board. And Adil Manzoor, keep it up. Zubair, Khan Wasim, Yusuf sending in Lau, Khalid Najjar, and Mohammad Amin Butt, and Advocate A.R. Khan is mentioning the same, which I was telling you, that Bar Associations, they are in a desperate need of a wicket to break the partnership at this stage, to try to crawl back themselves in the game. Otherwise you will be chasing a daunting score. Once again, this has been hit hard through the covers, and absolutely brutal, and it goes into the fence for 4. 150 comes up in quick time. Oh, this is scintillating stuff with the bat. Absolutely fantastic. We're witnessing a batting of high class, a hitting of high audacity, a hitting of high authority, and given those opportunities to the batters, they have really pounced on to that. Zubair moves to 123. Uzair is just watching that carnage at the other. He's just a happy man at the other end.
Just watching Zubair Ahmed smoking the bowlers, hitting the bowlers, punishing the bowlers to all corners of MET Sports Field. I told you earlier, this is a batting paradise. This is a kind of a batting surface where the batters love to bat on, and Zubair has absolutely loved it. And this one thumped it over extra cover for 6. Just finding the fence regularly, just finding the middle of the bat more often. Zubair has been the driving force. Zubair has been the real danger today, and he has absolutely been a single man. We can say it has been a solo show with the bat. He is delivering a performance he will remember for ages. Starts this over with a 4 and now hits a 6 over covers. And Bar Association is Bandipora feeling absolute hell out there, the bowlers. The score is 158 with that 6. We're in over number 13. Still 7 more overs to go, and they need to pick the wicket of Zubair. He is just batting on a different kind of a planet, on a different kind of a wicket. And Bar Association is Bandipora. The bowlers have no chance at all. No clues, no answers. They are just looking clueless. And next ball is wide again. And this has gone one bounce. We'll have to wait and watch. Let's wait for the signal of the umpire. Is he going to signal a 6 or a 4? He signals boundary. He signals a 4 here. 14 runs of first 3 bowlers. 162 for the loss of 2. Has Srinagar staff now. They will be thinking that it's just an enough score now. The way we are batting, the way the batters are punishing the bowlers and taking a likings on the bowlers. Bar Association is Bandipora. Rahat Kumar, he's just mentioning Abbas, just get a wicket here. And Khan Wasim, catch Wasim Yusuf as well. And he has absolutely been a nightmare for Bar Association, their bowlers. And he definitely is going to haunt them in their dreams today. The way he has batted, it is unbelievable batting stuff, unreal batting stuff. And look at his score on board. He is 133 of just 48. Again he tries to go for the swing, and this time there is no connection at all. And the problem is Bar Association as Bandipur are facing. At the other end they have not been able to pick up wickets, and at the other end they are just leaking runs at will. And this has been hit down the ground to long off. He'll get a single, and that single takes the score to 163 for 3 with a ball to go. Advocate A.R. Khan just mentioning that they're bowling overpitch short, full tosses, and it is not going to bring them back into the game. You just need to bowl length and bowl stump to stump and force the batters for those mistakes. Adil Manzoor mentioning he is an experienced campaigner. He is a seasoned man, a veteran batting on a batting paradise, and has been the knock full of beans, full of energy, and his stroke play has been absolutely dominant. 13 overs gone, 163 for the loss of 2. शुक्रिया फिरदौस। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल और 163 है मजमूई स्कोर। अभी भी 7 ओवर्स का आना बाकी है और जुबैर अहमद 134 रन पर खेल रहे हैं। सिर्फ 50 गेंदों का सामना करेंगे मुदस्सिर भट्ट की गेंद का। जुबैर मुदस्सिर भट्ट की गेंद का सामना करेंगे। इस मरतबा गेंद को खेला, हवा में शॉट देखना होगा और गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर। ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेला कवर के ऊपर से 6 रन के लिए, और एक और छक्का आता हुआ जुबैर के बल्ले से। इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 169 हो चुका है और जुबैर 51 गेंदों पर 143 रन पर पहुंच चुके हैं। अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो है आतशी पारी खेल रहे हैं यहाँ पर जुबैर अहमद। उनका बल्ला आग उगल रहा है और मैदान के चारों अतराफ स्ट्रोक्स देखने को मिले। आदिल मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
एडवोकेट या खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख्वाजा वसीम यूसुफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब एक मरतबा फिर मुदस्सिर भट्ट सामना करेंगे जुबैर अहमद। जुबैर अहमद ने 140 रन बनाए 51 गेंदों का सामना करते हुए। मुदस्सिर की गेंद जुबैर के लिए, एक और बड़ा स्ट्रोक, इस मरतबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। पल भर के लिए लग रहा था कि गेंद शायद कैच की सूरत में लॉन्ग ऑन की तरफ गई है, लेकिन जी नहीं, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। मुदस्सिर के बल्ले से, ये जुबैर के बल्ले से आने वाला एक और छक्का। 146 रन बनाए जुबैर ने 52 गेंदों का सामना करते हुए। एक मरतबा फिर सामना करेंगे मुदस्सिर की गेंद का, इस मरतबा मौका है, हवा में शॉट, फील्डर गेंद के नीचे थोड़ा आगे गए और इस वजह से यह कैच ड्रॉप होता हुआ। रनिंग में थे लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर वो बहुत ज्यादा आगे गए और गेंद जो है उनके काफी पीछे पिच लैंड हुई। तो इस तरह से कोई नुकसान नहीं श्रीनगर स्टाफ के लिए। एक मरतबा फिर सामना करेंगे श्रीनगर स्टाफ की जानिब से जुबैर अहमद। जुबैर अहमद जो है बल्कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है। अब उजैर नजीर सामना करेंगे, 13 रन बनाए उजैर नजीर ने। मुदस्सिर की गेंद का सामना करेंगे, लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन इजाफी रन के साथ 177 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। जुबैर अहमद 147 रन पर खेल रहे हैं, 53 गेंदों का सामना किया जुबैर अहमद ने। एक मरतबा फिर ओवर में अगली गेंद के साथ, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया वापस बॉलर की जानिब, रन बनाने का कोई मौका नहीं। राहत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अगली गेंद इस मरतबा लॉन्ग ऑन की जानिब, लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। आदिल मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं और हिना लोन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, जुबैर के लिए पहले से ही विकेट छोड़ दी थी, मिड विकेट की जानिब गेंद को खेला, फील्डर मौजूद मिड विकेट बाउंड्री पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका। श्रीनगर स्टाफ का स्कोर हो चुका है 178, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अभी भी 8 ओवर्स का बल्कि 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 6 ओवर्स का आना बाकी। 179 है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर अहमद 148 रन पर खेल रहे हैं। राहत कुमार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बांडीपोरा टीम नीड वन गुड कोच जी, और खालिद नज्जार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हिना लोन के साथ। और 179 है स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। श्रीनगर स्टाफ का सिर्फ 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और अंदाजा कीजिए 148 रन बनाए 179 के स्कोर में जुबैर अहमद ने, इकलौते बल्लेबाज जो अभी तक क्रीज पर टिके हुए हैं, न सिर्फ टिके हुए हैं कि बल्कि मैदान के चारों अतराफ बड़े बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल रहे हैं। 15वें ओवर की पहली गेंद जुबैर के लिए, गेंद को खेल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे, मिड विकेट बाउंड्री पर और बिल आखिर जुबैर की इनिंग का खात्मा होता हुआ। जुबैर की इनिंग का खात्मा होता हुआ और बॉलर है मुदब्बिर नजीर भट्ट। मुदब्बिर नजीर भट्ट ने जुबैर अहमद की विकेट हासिल की, जिन्होंने 148 रन की पारी खेली 54 गेंदों का सामना करते हुए। और यहां जो है ये तीसरी विकेट गिरी श्रीनगर स्टाफ की। श्रीनगर स्टाफ की यह तीसरी विकेट गिरी और कुल मिलाकर जो है 179 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर मुदब्बिर नजीर भट्ट के खाते में यह विकेट गई। तो अब देखना होगा श्रीनगर की जानिब से अब नए बल्लेबाज जो आए हैं, ये ऋषि आए हैं, ऋषि नए बल्लेबाज। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ऋषि क्या थी? ऋषि फिदा आए हैं नए बल्लेबाज। ख्वाजा वसीम यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जानना चाहते हैं कि इस वेन्यू पे हाईएस्ट टोटल क्या है, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है, लेकिन जो फाइनल मुकाबला हुआ था सुल्तान वॉरियर्स और शाइनिंग स्टार सोपोर के दरमियान, उसमें 200 से जायद का टारगेट मिला था सुल्तान वॉरियर्स को। आदिल मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खालिद नज्जार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बॉलिंग मार्क पर है मुदब्बिर और नए बल्लेबाज आए हैं ऋषि फिदा। ऋषि फिदा जो है सामना करेंगे मुदब्बिर की गेंद का। मुदब्बिर ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे गेंद की, फिदा उनको निकाल दिया, गली फीड किया जाता है, एक रन बनाने का मौका। 15वें ओवर का खेल और स्कोर है 179, 3 विकेटों के नुकसान पर। 179 है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। मुदब्बिर नजीर एक मरतबा फिर सामना करेंगे ऋषि फिदा, बल्कि सामना करेंगे उजैर नजीर। गेंद को खेल दिया है, फील्डर उस ओर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा मजीद स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ श्रीनगर स्टाफ का हो चुका है 179, 3 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि फिदा जो है वो एक मरतबा फिर सामना करेंगे गेंद का। ऋषि फिदा के लिए ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ और दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 100 गाले पर 81 हो चुका है। अभी स्कोर कार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। मुदब्बिर नजीर है बॉलिंग मार्क पर। इस दौरान लेग स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 183, 3 विकेटों के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल जारी है। खालिद नज्जार, आदिल मंजूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट मुदब्बिर की, और कदमों का इस्तेमाल हवा में खेला गया। स्ट्रोक 1-2 टपा, कहाँ कहा जाएगा, 1-2 कदम आगे जो है गेंद जाके गिरी शॉर्ट के लेग के फील्डर से, और गेंद उनके हाथ में जाती हुई 1 रन का इजाफा स्कोर में, बल्कि कोई रन नहीं मिला। 183 हो चुका है स्कोर। अब ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे मुदब्बिर नजीर। कामयाब ओवर उनका, जिसमें उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज जो उनके लिए साबित हो रहे थे जुबैर अहमद, उनकी विकेट हासिल की। इस दौरान देखना होगा फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। 185, 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल। श्रीनगर स्टाफ का एक कहा जाएगा इस मुकाबले में स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ श्रीनगर स्टाफ। After 15 overs, 185 for the loss of 3, and Srinagar staff already have above par runs on board. It's a big score on board with 5 more overs to go. Amir Hassan will continue. Rishi Fida just arriving at the crease. The highlights of the innings was Zubair's scintillating ton, and he smashed 140 odd runs of just 47 or 48 bowlers. In the meantime, the fresh over begins with the first ball. You know, now the batters are trying absolutely hard to go at the bowlers and to fetch some runs quickly. And 5 more overs to go. You know, they'll be trying absolutely hard to get at least 50-60 runs, and if they get 60, it will be 245, and will be a really tough thing, will be a really tough going for Bar Association's Bandipora. In the meantime, Amir goes with the second ball away from us. It's a full toss, hits it down to long off, and he completes the catch. A full toss ball brings the wicket as Uzair walks back to the pavilion. 4th one falls. Wicket number 4 goes down. Amir Hassan strikes 186 for the loss of 4. Uzair Nazir, who made 17 of 26 balls, is walking back to the pavilion. And Khan Wasim Yusuf, dear brother, I don't have
any information regarding that highest total on this ground. Adil Manzoor, and then we have got Khalid Najjar watching the game and enjoying the game with Muzammil Lun and Rahat Kumar. And today the bowlers of Bandipora have that will, and they conceded way too many runs and have let Srinagar staff to travel their way back into the game after picking 2 quick wickets early on. And the bowlers failed to use the conditions well. The bowlers failed to get those wickets in the middle overs. But they got 2 wickets now, and a wide there by the umpire, and it takes the score to 187 for the loss of 4. I know Khan Wasim Yusuf strong comeback by picking up those 2 wickets. Just have a look at the runs being scored on board. 187 is already on board, and we have 5 more overs left. And next ball tries to steer it away, gets an inside edge, goes on the bounce to the wicket keeper, and there is no addition to the total. There is no run at all. His next ball just pushes it on the offside for a single. That's 188 it is for the loss of 4 wickets. His next ball nicely guides it away to third man, riders the bounce well, and he gets a single. That single takes them to 189. He is still in over number 16, and Amir Hassan in this over has got a wicket, bowling wicket to wicket. And I was telling you about the whole case scenario of the game. They started well, Bar Association's Bandipora, but in the middle overs Amir was absolutely on song with the bat, and he has completely demolished the bowling lineup of Bar Association's Bandipora, smashing a record-breaking 100 today. Advocate A.R. Khan, Amir, he just wants Amir to bowl wicket to wicket. Tariq Bhatt as well in this over, and there has been some respite, but he is conceded with wide, just giving way too many extras. And again it is down the leg side, and once again the umpire has to flex his muscles. The umpire has to exercise his arms, as once again it has been signalled as a wide. 191, and they will be, surely there is no doubt they will be chasing a mammoth target. Bar Association is Bandipora. Now we have to think of the batters they have in the lineup, how they bat while in chasing the target. And this one, he goes lofted over extra cover, and it goes to the fielder on the bounce. In the meantime, 2 more runs have been scored. Excellent running between the wickets by sprinting across the turf, completing 2 more runs. So 16 overs have been bowled. It's 195 for the loss of 4. 16 ओवर्स के बाद कुल मिलाकर 195 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और आज दोपहर को टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है श्रीनगर स्टाफ की टीम ने। हालांकि उनकी शुरुआत काफ़ी ख़राब रही थी, मायूस कुन शुरुआत रही थी उनसे, और 2 विकेट्स जल्दी गंवाए थे उन्होंने। लेकिन उसके बाद आज ज़ुबैर ने क्या गज़ब की बल्लेबाजी की और मैदान के चारों अतराफ स्ट्रोक्स लगाए, और पूरी तरह से ये मैदान उनके उन स्ट्रोक से, उनकी उस पारी से चमक उठा, आज खिल उठा। आज करीबन 10-12 छक्के उन्होंने लगाए। हालांकि 1 ओवर में लगातार 5 गेंदों पे 5 छक्के उन्होंने लगाए थे, और इस तरह से श्रीनगर स्टाफ की गज़ब की वापसी हुई है। और इस बार गेंद को टैप करना चाहते थे, ज़ोरदार अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं अंपायर को, नकारा उन्होंने इस अपील को। स्कोर 194, 4 विकेट के नुकसान पर। We are in over number 17 of the game, as next ball just pushes it back to the bowler and goes through for a quick single, and that single takes them to 195 for the loss of 4. The Mir Shabir
bowling his first over, has conceded 2 runs until now. And looking well set for a big score here, looking well set for a mammoth total. And Srinagar staff batting with positive attitude, with a great intent in the batting. Zubair was the highlight of the innings today, as he smashed the record books, smashed a breathtaking, spectacular 100. And in the meantime, next ball, as he drives him on the up, hit hard down to long off, will fetch him a single. And when is the match of Bar Associations, Baramulla eagerly waiting to see Advocate Shah Abdullah batting is a class act of his era. And Pirzada Azam, we don't have the information regarding the fixtures, as the organizing body of Kashmir Bar Associations, they draw the fixtures, and whenever the fixture comes, you will watch the game live and exclusive on Global News Network. You will be informed a day before on the official handle. And 197 it is after 16.5 overs. What a start this is for Srinagar staff in this edition of Kashmir Bar Association Cricket Cup. The final ball, and he swipes cross-batted, goes down to mid-wicket, and the batters will get a single, and he's going to retain the strike. And a good over by Shabir, just conceded 5 runs. And Khan Yusuf mentioned Khaja Wasim is, I guess he is mentioning good over by Mir, and he finishes it with a single. And in the meantime, 17 overs have been bowled, 198 for 4. It's a huge score, it's a daunting score on board, and it will need a special efforts from the batters of Bar Associations Bandipora to hunt it down. With the first ball of the fresh over, this has been hit down to long off all along the ground, and a slight fumble there by the fielder allows the batters to sense a chance to steal 1 more additional run, and overthrows yielding 2 more runs. Now 200 up for Srinagar staff. They are 200 for the loss of 4 in over number 18. That gives him the charge, but doesn't time it well. It's in the air, and the fielder at Skerlak puts down the catch, and 2 more runs have been taken. That could make some difference in the runs being scored had that catch been taken. But the catch goes down, and with that they have given 2 easy runs. And the fielding has been the matter of concern for Bar Association as Bandipora. And just 2 more overs left after that. And outside edge flies up in the air. He was trying to throw a kitchen sink at it, and tries to loft that one away. Gets a thick outside edge. Goes down to third man. Will get a single. And Advocate Majid Mushtaq Rathar. Good over by Shabir Pirzada Azam. Thank you very much for your love and support, brother. Thank you very much for the appreciation as well. Sending you a big shout out from Global News Network, and to the viewers who continuously engage with the game, who continuously joined us today and watch it neck to neck. As the next ball is down the leg side, tries to go for the fine lap, but doesn't connect, will be a wide. So that 1 more run added to the score takes them to 204 for the loss of 4. 2 more overs left after that, and it is obvious Bar Association as Bandipur are going to chase a massive target today against Srinagar staff. And next delivery, down comes the batter, and it's down to long off. A good effort there by the fielder, and 2 more, a single again.
बहुत बहुत शुक्रिया पीरजादा आजम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ जो है आप सब व्यूवर्स को जानकारी देना चाहूँगा, श्रीनगर स्टाफ का स्कोर 207, 4 विकेटों के नुकसान पर और 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 2 ओवर्स का आना बाकी है। देखना होगा इन 2 ओवर्स में मजीद कितने रन्स आ जाते हैं और क्या टारगेट सेट होता है बार एसोसिएशन बांडीपोरा के लिए। कश्मीर स्टाफ का स्कोर जो है 211, एक अच्छे टोटल की जानिब रवां दवां है श्रीनगर स्टाफ की टीम। और सबसे अहम बात यह कि जुबैर अहमद ने लाजवाब पारी खेली, 142 रन्स बनाए और उनके बल्ले से मैदान के चारों अतराफ स्ट्रोक्स देखने को मिले, बड़े बड़े छक्के देखने को मिले और एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए थे जुबैर अहमद ने। अब मीर शब्बीर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। पारी का 19वां ओवर फेंकेंगे। उमर उनकी गेंद का सामना करेंगे। वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 212, 4 विकेटों के नुकसान पर। मीर शब्बीर बॉलिंग मार्क पर, उमर नजीर जो है सामना करेंगे उनकी गेंद का। उमर बॉलिंग मार्क पर, उमर जो है तैयार। अगली गेंद, जोरदार अपील, वहां पर वाइड बॉल का इशारा। लेग स्टंप से बाहर गेंद, जोरदार अपील हुई थी विकेट कीपर और बॉलर के जरिए, लेकिन अंपायर ने बिना किसी हिचकिचाहट के वाइड बॉल करार दिया और स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 213। श्रीनगर स्टाफ का स्कोर इस दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांडीपोरा बार एसोसिएशन के खिलाफ। अगली गेंद, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया शॉट कवर पर। 1 रन से रोक नहीं पाए गेंद फील्डर बल्लेबाजों को और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। मीर शब्बीर बॉलिंग मार्क पर, अब सामना करेंगे उनकी गेंद का ऋषि फिदा। 18 रन बनाए ऋषि फिदा ने, सामने है मीर शब्बीर के। 19वें ओवर का खेल जारी। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की जानिब, स्लॉप स्वीप और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 1 रन बना। दूसरे रन के लिए गए और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 214, 4 विकेटों के नुकसान, 216 हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। 19वें ओवर का खेल जारी। मीर शब्बीर बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे ऋषि फिदा। एक मतबा फिर उनकी गेंद का 19 रन बनाए, 20 रन बनाए ऋषि फिदा ने और सामने है मीर शब्बीर के। गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता और दोनों बल्लेबाजों के पास मौका नहीं रन हासिल करने का। हालांकि रन नॉन स्ट्राइक एंड से जो नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है वो आगे गए थे। इस मरतबा कदमों का सही इस्तेमाल, गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री की जानिब। नाकस फील्डिंग का मुजाहरा, हालांकि फील्डर मौजूद थे, रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन को छू गई। ये ऋषि फिदा के बल्ले से आने वाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये यार खान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो 221 हो चुका है मजमूई स्कोर और 18.5 ओवर्स का खेल हो चुका है। 19वें ओवर का खेल जारी। पीरजादा आजम जो कि इस टूर्नामेंट की निगरानी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। मीर शब्बीर ओवर की आखिरी गेंद के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद को खेल दिया है और गेंद फाइन शॉट फाइन लेग पर फील्डर के बिल्कुल सर के ऊपर से होती हुई 4 रन के लिए ये चौका आता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 225 हो चुका है। जैसा हमने पहले ही जिक्र किया था कि एक बड़े टोटल की जानिब जा रही है श्रीनगर स्टाफ की टीम और एक बड़ा टोटल भी अभी कहा जाएगा खड़ा हुआ है। अभी भी 1 ओवर का आना बाकी है। 225 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर और बांडीपोरा बार एसोसिएशन टीम को
जब बल्लेबाजी के लिए आना होगा तो आते ही उन्हें बड़े स्ट्रोक्स की जानिब जाना होगा, क्योंकि यहां पर जो है करीब उनके लिए 11 से जायद की औसत अभी दरकार है। अब देखना होगा इस आखिरी ओवर में मजीद कितने रन आ जाते हैं। आखिरी ओवर में आमिर हसन को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। आमिर हसन फिदा के लिए कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया मिड विकेट की जानिब 4 रन के लिए। फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन गेंद उनकी रफ्तार से गेंद की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज और गेंद बॉर्डर लाइन को छू गई 4 रन के लिए। एडवोकेट यार खान, पीरजादा आजम, एडवोकेट माजिद मुश्ताक राथर और ख्वाजा वसीम यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आखिरी ओवर का खेल जारी है और सामने है ऋषि फिदा। 28 रन बनाए 17 गेंदों का सामना करते हुए 229 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। आमिर हसन है बॉलिंग मार्क पर। अभी भी 5 गेंदों का आना पहली पारी में बाकी है। ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऋषि फिदा के लिए हवा में खेला गया स्ट्रोक और लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद। एक टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ अगर गेंदबाज जो है सही टाइम पर हाथ में लेते तो गालिबन यहां मौका था विकेट हासिल करने का, लेकिन हाथ से छूटी गेंद और इस तरह से अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट आमिर हसन, गेंद की ऋषि फिदा के लिए ऑन साइड की तरफ 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। यह चौका आता हुआ आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से यह चौका आया और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है तेजी के साथ बढ़ता हुआ 235 हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। 235, अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी इस ओवर में। 235 मजमूई स्कोर, पहले 1-2-3 कदम आगे और बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस मर्तबा 6 रन के लिए। यह छक्का आता हुआ पहला छक्का ऋषि फिदा के बल्ले से। उनका इनफरादी स्कोर 34 बल्कि 40, मजमूई स्कोर हो चुका है 241 हो चुका है मजमूई स्कोर। अभी भी यहां पर जो है अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। 241 हो चुका है स्कोर। 12 से जायद की औसत से रन्स अब बनाने होंगे दूसरी पारी में बार एसोसिएशन बांडीपोरा को। मुश्किल जरूर होगा उनके लिए, देखना होगा उनकी जानिब से कौन से बल्लेबाज होंगे जो उनके लिए एक जारहाना किस्म की पारी खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से जुबैर ने यहां पर बल्लेबाजी की और लाजवाब अंदाज से सिर्फ 55 गेंदों का सामना करते हुए जुबैर ने 143 रन बनाए थे, उसी तरह की पारी यहां पे खेली होगी बांडीपोरा बार एसोसिएशन की जानिब से किसी बल्लेबाज को, तब वो इस मैच में बने रह सकते हैं। आखिरी ओवर आमिर हसन का, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक जो है 16 रन आए 4 गेंदों पर। 241 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर श्रीनगर स्टाफ का, और एक मजबूत पोजीशन के साथ इस मुकाबले में श्रीनगर स्टाफ की टीम। अब अगले बल्लेबाज कौन से होंगे देखना होगा। अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस मरतबा गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन की जानिब। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ, दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 243 हो चुका है। अब पहली पारी की आखिरी गेंद का सामना करेंगे ऋषि फिदा, जिन्होंने 21 गेंदों का सामना किया, 42 रन बनाए। 2-4 कदम आ गया है, फुल टॉस गेंद 6 रन के लिए मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 250 रन यहां पे टारगेट मिला है दूसरी पारी में, और मुझे लग रहा है कि इस मैदान में अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा किया की टीम ने। 249 रन बनाए। मुकर्ररा 20 ओवर्स में नुमाया स्कोरर रहे श्रीनगर स्टाफ की जानिब से जुबैर अहमद, जिन्होंने Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the run chase of Bar Association's Bandipora.
As the run chase has begun, they are chasing 250 runs. It's a mammoth score. It's a huge target right in front of them. And the two openers are out there. They have been sent on a mission. It's Adil and Advocate Burhan who will start the innings, who will start the proceedings, while as Rishi Fida, who played a fine cameo with the bat at the fag end of the game, has got the ball in hand and all set to go for the chase. 250 the target, and not an easy one, not going to be easy to chase the score down, but they will back themselves as the wicket is full of runs. This is a flat deck for batting. In the meantime, first ball, it's a dot as Adil Jan gets ready to face Rishi Fida once again, and onto the pad is Rishi Fida, and Adil just works him nicely onto the onside all along the ground. Will get a single, and off the mark it is. Off the mark is Adil Jan. Bar Association is Bandipur off and running with a single, starting the innings with a single here, and the first runs on the board, 1 for none in over number 1. 250 the target in front of them, a daunting task, an uphill task. As next ball, as he chops the drive down to the wideish cover, get a single and off the mark. Both the batters now starting the innings with a single. It's 2 without loss. The highlights of the batting of Srinagar staff was Zubair's breathtaking, Zubair's scintillating century, 143 he scored, and setting the tune for Srinagar staff, and they posted a huge and a daunting task of 249 runs on board. And now coming back to this game, they are in chase. They are going to chase the score, and no doubt it's a big total. It's a huge task, but you need to bat well. And next ball tries to go on the onside, and he gets an inside edge back onto the pad. Fida Rishi, who played a scintillating innings at the fag end of the game. I guess he smashed 27 runs of just 47 unbeaten runs of just 20 bowlers, and helped the team to scale the target up 249 on board. And a huge target chasing the side of Bar Associations. It will be really tough to chase the score down, and up against a quality bowling side of Srinagar. May I remind you, this is Kashmir Bar Association's Cricket Cup being organized here at this sports field of MET, and we are having a match number 2 of the day. Bar Association's Bandipur are taking on Srinagar Stars. In the meantime, Rishi Fida goes once again. This is up in the air, but well wide of the fielder, well over the fielder's head, and will run down to the long off boundary for 4. The nice little shot to finish the first over, finishes it with a boundary. It's 6 without loss. Adil Jan gets the boundary, moves to 5. Advocate Burhan is just batting on 1, just faced that 1 delivery, and at the start of the innings the asking rate is 12.5. So you'll have to search, you'll have to find those boundaries from the beginning, you'll have to find those big shots from the very first over. And absolutely Arhan Imtiaz mentioning about Asim Bashir, and he is truly a gem of a player, an absolute genius with the bat, a run machine of Baramulla as well. And he's mentioning 61 bowlers, 126 unbeaten innings against the formidable and a strong side of Royal Goodwill, which is going on at Shalabug. And a terrific innings from Asim Bashir coming off the bat under a crunch situation, delivering a box office performance. Thank you, Arhan, for providing the information. As second over begins, Tanveer to bowl. As Tanveer goes with the first ball, this has been lofted down the ground, and Zubair is settling under the ball, but he cannot complete the catch, and he falls awkwardly on the ground. In the meantime, the both batters are sprinting back for a brace. 2 more runs being taken, and you need a positive intent. You need that intent with the bat from the very word go. You just have to score 12 runs per over, 12.5 runs per over to chase down the score. In case if you get 7-8 regularly, and after the halfway stage the game will slip out of your hands, it will be really tough to chase 160, 117 last 10 overs. So you'll have to at least get 12 runs per over in the first 10 overs. Just try to get 120, 130 and keep wickets in hand as well. And Mir Manzoor, walaikum salam, watching from Ashmukam, South Kashmir.
Thank you very much, dear viewers, for showing your love and support. A big match is going on at Shalabug as well, so the viewers might be enjoying the game. And 9 without loss in over number 2. Tanveer bowling from the com box, and it is the second over as he goes once again. A short delivery as the batter is he's asking for 1 for the over, and umpire has already signalled 1 for the over there. A bouncer, a good bouncer there, a good short ball aimed at the helmet of the batter, and it goes whizzing past the helmet and into the gloves of wicketkeeper. 9 without loss as Tanveer goes once again. A slower delivery hit on the onside in the gap, and the fielder there had no chance at all. Runs away down to the boundary for 4. Takes the score to 13. Khalid Najjar, all the best boys, and sending in best wishes for his team. It is 13 without loss. As I could tell you, 250 runs. It's a huge score. It's a daunting task, or they call it a Herculean task, a mountain to climb for Bar Association as Bandipora, and needs some extraordinary efforts in the bat, special efforts with the bat to scale the target, to go over the line, and to make things interesting. The batters have to fire with the bat at the top. It's all about top order to chase the score down when you're chasing a huge target, when you're chasing a mammoth score. You always have the responsibility. The batters need to step up. As Tanveer goes once again onto the pad, nicely flicks it away in the gap. Will get a single. Have to content themselves with a single only. Come on, let's go. बस ठीक है बस. And Adil Manzoor, take time, boys. And Adil Manzoor, I could tell you that they are chasing 215 runs, so they cannot take the kind of a time to consume those dots, to consume those deliveries. 12 and a half runs is a very tough ask. So they will have to attack from the very first ball of the game. You will have to get those 12 runs per over, and you cannot get those 12 runs by just doing it in singles, doubles. You'll have to hit those 4s and 6s, and Adil needs to bat through the whole innings. And Mansoor Decorations at Rafiabad, the proud sponsor of Global News Network as well. He is just watching the game, enjoying the game, and you're watching it live and exclusive from MET Sports Field. And the official sponsors are Almaida Bakery Rahama, Mansoor Decorations at Rafiabad, and BMZ Group Strakpora. Here we go with the next ball. Oh, that is a beautiful strike in the slot, and dismisses the ball out of the side for half a dozen, and hits the jackpot, smashes that one away, and gets a much needed 6. That was a powerful strike. What a connection with the bat. Absolutely muscles the ball and has gone many a mile. It's a country mile hit, and it takes the score to 21 for the loss of 1. Rishi Fida has been greeted with a thunderous strike down the ground. And take that, says the batter, Advocate Burhan. Absolutely gorgeous shot that was. A terrific strike, and sends the ball sailing into the stands for half a dozen. And he's giving him a buffeting reply now. And Rishi was hitting the ball as well when he was batting. Now he's been given a terrific reply by Burhan, Advocate. Next ball, and he is clever there, just taps it on the offside. He was itching there to steal a single, but the fielder swoops onto the ball very quickly, and he was very electric in the field and denies the batters a single. And Iqbal Rabbani sending in love for Burhan, and Adil Manzoor, power hitter, Khalid Nisar, and A.R. Khan as well. We're in over number 3, 21 without loss. As Rishi goes again to Burhan, tries to go for the big shot, tries to replicate the same shot, but doesn't connect at all, and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. I was having a word about this. 250 is the target. And you need big overs from the very word go. You need big overs from the start of the innings.
and with that you'll have to keep eyes on saving and preserving your wickets. And next ball to Burhan, goes cross batted on the onside, swings it away, swings fine down to the mid-wicket region, but the fielder is there. The batters steal a single. In the meantime, score moves to 22 without loss. Still a long way to go, still plenty of job to do in the game. And Bar Association is Bandipora. And next ball hits it on the onside down to mid-wicket. He's got a good fielders there. Oh, misfielder dear. What have you done? Long on fielder just lets the ball to go through the legs. And it has gone into the fence for 4. Finishes over number 3 with a boundary. 3 overs gone. It's 26 without loss. शुक्रिया फिरदौस आपका। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और रन चेज में 26 है मजमूई स्कोर बिना किसी नुकसान के बार एसोसिएशन बांडीपोरा का। रन्स दरकार 250 रन्स मुकाबला जीतने के लिए एक बड़ा टारगेट खड़ा किया श्रीनगर स्टाफ की टीम ने। और यहाँ देखना होगा ये सलामी जोड़ी जो है कितनी देर तक टिकी रहेगी क्रीज पर, और क्या यहाँ पे जो है टारगेट सेट हो, बल्कि यहाँ पे जो है किस तरह से रन चेज में बल्लेबाजी होगी। खालिद नज्जार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एडवोकेट यार खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चौथे ओवर का खेल शुरू होने को है। बॉलिंग मार्क पर एडवोकेट बुरहान के लिए गेंद को खेला, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन मुकम्मल होता हुआ तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किया। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 27-6 बिना किसी नुकसान के। चौथे ओवर का खेल जारी। तनवीर अहमद है बॉलिंग मार्क पर। 27 हो चुका है मजमूई स्कोर। तनवीर अहमद अगली गेंद के साथ सामना करेंगे। अब उनकी गेंद का आदिल जान, गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जाने, फील्डर गेंद के पीछे। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे, वहां पर जो है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने की कोशिश, गेंद रुकती हुई और 1 रन का इजाफा। और आदिल जान जो है उन्होंने 1 रन का इजाफा हुआ, मौका था यहां पर दूसरा रन लेने का, लेकिन आदिल जान जो है वो चहलकदमी के साथ दौड़ते रहे और सिर्फ 1 रन मिला। अब एडवोकेट बुरहान जो है वो सामना करेंगे तनवीर अहमद की गेंद का। 28 हो चुका है स्कोर। चौथे ओवर का खेल जारी। एडवोकेट बुरहान अब सामना करेंगे तनवीर अहमद की गेंद का। 250 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए बार एसोसिएशन बांडीपोरा को। उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए तनवीर अहमद, कंधे का इस्तेमाल किया इस मरतबा गेंद पर और गेंद को पीछे पिच किया। उछाल लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। चौथे ओवर का खेल जारी है। 28 स्कोर बिना किसी नुकसान के बार एसोसिएशन बांडीपोरा का। अगली गेंद हवा में खेला गया स्ट्रोक, यहां मौका मिल सकता है विकेट हासिल करने का, और विकेट हासिल होती हुई बुरहान के पॉइंट पर उनका कैच लिया गया। तनवीर अहमद की गेंद का शिकार हुए बुरहान आउट होकर बॉल लाइन वापस जाते हुए बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा और पॉइंट पर फील्डर के सीधे हाथ में गेंद जाती हुई पहली विकेट गिरी है यहां 28 के मजमूई स्कोर पर बार एसोसिएशन बांडीपोरा की। 250 रन्स का बड़ा हदफ मिला है मुकाबला जीतने के लिए बार एसोसिएशन बांडीपोरा को, और 28 है मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। बुरहान आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। एडवोकेट बुरहान ने 9 गेंदों का सामना किया और 12 रन्स बनाए एडवोकेट बुरहान ने। तनवीर अहमद अभी तक के कहा जाएगा कामयाब गेंदबाज, विकेट हासिल की, और आसिफ इकबाल आए हैं अब नए बल्लेबाज। आसिफ इकबाल आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे तनवीर अहमद की गेंद का। नॉन स्ट्राइक एंड पर आदिल जान जिन्होंने 16 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते हुए, और स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आए हैं आसिफ इकबाल, सामना करेंगे तनवीर अहमद की गेंद का। 250 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए बार एसोसिएशन बांडीपोरा को, और पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में श्रीनगर स्टाफ की टीम ने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया 250 रन का। तनवीर अहमद गेंद की, और यहाँ कैच गालिबन हुआ है, जी हाँ, और आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए कॉट बिहाइंड हुए हैं
आपको रीप्ले में ज़रूर दिखाना चाहूँगा किस तरह से तनवीर अहमद के खाते में जाने वाली दूसरी विकेट, आसिफ इकबाल आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए दूसरी विकेट गिरी है और आसिफ इकबाल आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। तो इस तरह से अब मुश्किलात बढ़ती हुई बार एसोसिएशन बांडीपोरा के लिए। ए बी माजिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिलाल अहमद जुड़े हैं पांजला रफियाबाद से और इनके साथ साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हैं। बट अरशद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद नज्जार और इनके साथ साथ अब्दुल मजीद और खालिद नज्जार भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर 28 के स्कोर पर 2 विकेटें गिर चुकी है बार एसोसिएशन बांडीपोरा की। आउट होने वाले बल्लेबाज एडवोकेट बुरहान और आसिफ इकबाल, ये आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। हैट्रिक पर है तनवीर अहमद। अब देखना होगा नए बल्लेबाज आए हैं मुनीर, एडवोकेट मुनीर आए हैं बल्लेबाज, हाजी मुनीर बल्लेबाज आए हैं नए बल्लेबाज और सामना करेंगे तनवीर अहमद की गेंद का। तनवीर अहमद जो है हैट्रिक पर है, क्या वो हैट्रिक लेने में वाले पहले बल्लेबाज पहले गेंदबाज बनेंगे इस मुकाबले के? देखना होगा मुनीर के लिए। तनवीर अहमद की गेंद, बैक फुट पर गेंद को खेलने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, शॉट फाइन लेग पर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। शेख बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल मजीद, आदिल मंजूर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर जो है 28 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज एडवोकेट बुरहान और आसिफ इकबाल, ये पवेलियन वापस जा चुके हैं। शेख बिलाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कश्मीर बार एसोसिएशन क्रिकेट कप इस वक्त जारी एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में और इस वक्त मुकाबला है बार एसोसिएशन बांडीपोरा और श्रीनगर स्टाफ के दरमियान। एडवोकेट AR खान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद और इस मतबा आदिल जान ने गेंद को खेला मिड विकेट की जानिब, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद जो है गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। एडवोकेट आदिल जान के बल्ले से आने वाला ये चौका, इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 32 हो चुका है, बल्कि 32 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। ऋषि फिदा है बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे एक मतबा फिर आदिल जान। ऋषि फिदा आदिल जान के लिए बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर को खड़ा किया गया है। अगली गेंद बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को मोहतात अंदाज से खेला आदिल जान ने, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 32 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी है। 250 रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए बांडीपोरा क्रिकेट एसोसिएशन को। अगली गेंद ऋषि फिदा के, गेंद को खेला मिड ऑफ के ऊपर से, देखना होगा गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। आदिल जान के बल्ले से आने वाला ये एक और चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 36 हो चुका है। 5वें ओवर का खेल जारी और ख्वाजा वसीम यूसुफ लिख रहे हैं कि दिस इज द की प्लेयर ऑफ बार एसोसिएशन बांडीपोरा। खालिद नज्जार भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब ऋषि फिदा अगली गेंद के साथ आदिल जान के लिए, गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला, रन लेना चाहते थे लेकिन जैसे ही देखा गेंदबाज जो है गेंद तक पहुंच चुके हैं, इरादा तर्क किया, अपनी क्रीज तक वापस आने में कामयाब। 36 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी। ऋषि फिदा है बॉलिंग मार्क पर। और AR खान, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट AR खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिलाल अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैच एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में इस वक्त जारी है कश्मीर बार एसोसिएशन कप का ये एक अहम मुकाबला। तारिक भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट आदिल जान जो है वो स्ट्राइक पर है, फिदा की गेंद का सामना करेंगे। ऋषि फिदा बॉलिंग मार्क पर, दोबारा उन्हें रोका एडवोकेट आदिल जान ने। हिलाल अहमद
और बांडीपोरा बार एसोसिएशन टीम को जो है उनकी हौसला अफजाई करते हुए एडवोकेट सोफी फेरोज जो कि बार एसोसिएशन बांडीपोरा के प्रेसिडेंट भी है, वो भी यहाँ पे मौजूद। इस दौरान हवा में शॉट और ये छक्का आता हुआ आदिल जान के बल्ले से, आदिल जान के बल्ले से आने वाला ये छक्का, और इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत यहाँ पर बार एसोसिएशन बांडीपोरा को। एडवोकेट सोफी फेरोज जो है बार एसोसिएशन बांडीपोरा के प्रेसिडेंट, वो भी यहाँ पे मौजूद है और अपने खिलाड़ियों की भरपूर हौसला अफजाई करते हुए, और इस दौरान जो है 6 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ बार एसोसिएशन बांडीपोरा का 42, 2 विकेटों के नुकसान पर ऋषि फिदा के ओवर की आखिरी गेंद अब होगी, और ऋषि फिदा जो है उन्होंने इस ओवर में 14 रन दिए। अब आखिरी गेंद फेंकेंगे एडवोकेट आदिल जान, उनका सामना करेंगे जिन्होंने 18 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाए एडवोकेट आदिल जान ने। आदिल जान के लिए आखिरी गेंद के साथ, गेंद की ऑप्शन से बाहर गेंद को खेला, रन लेना चाहते थे, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, मजमूई स्कोर है 42, 2 विकेटों के नुकसान पर बार एसोसिएशन बांडीपोरा का। After 5 overs, Bar Association Bandipora 42 for the loss of 2 wickets. And they have done a good job by picking up 2 early wickets. 250 is what they need to chase down. 250 is what they need to scale and to stay alive in the competition, stay alive in this tournament. And it has been a good start for Srinagar Stars. And in the meantime, Advocate Sophie Feroz has joined us, and he is the president of Bar Association of Bandipora. He is just appreciating, he is just having a good hand to the side of Bar Association as Bandipora. He is just enjoying the game out there in the middle, as Bar Association Bandipora will look to accelerate in the middle overs as well, as you don't have enough chances there. You can't afford way too many dot deliveries, you can't afford those silent overs. In the middle, you just need to find boundaries that will just need to score freely, as the final over of the field restrictions is yet to get underway. Gulzar has got the ball in hand, and Adil Manzoor, Khalid Najjar, Akash Butt, and then we have got Tariq Butt as well. Thank you very much, Hilal Ahmed. It is here at MET Sports Field of Sopor, with Wasim mentioning this is the key pair of Bar Association as Bandipora, and they need to carry the momentum, they need to carry the innings forward, as first ball of the fresh over goes straight over the bowler's head. He's got a slingy arm action, and that ball trickles down to long off as the batters steal an easy single. That single takes the score to 43 for the loss of 2, as we're in over number 6. That means it is the final over of field restrictions, and the wicketkeeper is standing back. I guess he wants to stay right up to the stumps. He is continuously seeing that the batter was leaving the crease, they were just charging down the track, and he just decided to go up to the stumps with third man there, and he has got gully, he has got a wideish flying slip, and he has got point and extra cover as well, with long off out, long on out, and in this he goes for the second time, wide outside off, and it has been signalled as a wide. So one more run added to the score. As you can see, umpire just exercising his arms there, declaring that a wide, with Lavanya Srini, Adil Manzoor and rest of the viewers watching the game. Thank you very much for staying connected with Global News Network and JK Sports Discovery on YouTube. Once again, slips it way outside off and has been signalled as a wide. Back-to-back wide deliveries, and takes the score to 45. So 6th over in progress. That means they have 83 bowlers to scale the chase of 250 runs. Now they need 205 to win. His next ball outside off again, and hit really hard, but good fielding, good effort there by the fielder has saved a couple of runs for the team. Anyway, to the left or to the right, this could have been a boundary, as there was no one backing up,
with 45 runs on board as Advocate Sophie Feroz, who is the president of Bar Association is Bandipora, giving his continuous love and support to Bar Association is Bandipora team, providing his valuable instincts and being shoulder to shoulder, neck to neck. It's a full toss ball, a leading edge, and the bowler puts it down on his own follow through. This could have been a wicket of the full toss ball. He was trying to swipe the ball away on the onside. Gets it high on the bat, a leading edge pops up in the air, and the bowler goes on his follow through and doesn't hold on to the catch, puts it down, dropped completely, and Adil Jan gets the life. They get a single. It was a chance for Gulzar to pick up a wicket here to get rid of Adil Jan, to dent them third time, but he has put down the catch. Adil carries his innings forward. He gets a life, he gets a reprieve. 46 for 2 it is in over number 6. At the start of the innings, you need to fire with the bat. You just have to find those boundaries at regular intervals. As we watch, Bilal goes again. Gulzar goes again, just wide outside off. As the batter line is for the cut shot, but doesn't get it. He was just crouching low, but no connection, and it goes into the gloves of wicketkeeper. The 46 run board for the loss of 2 wickets. 204 runs away to win of 81 bowlers. It's a tough ask, it's an uphill task. Next ball, and beautifully placed in the gap between the 2 fielders, and the ball will run away down to the cover boundary for 4. A bit fuller in length, nicely driven, a beautiful execution by the batter there, and placement was spot on, the timing was right, and the rest of the work is done by the outfield as the ball races along the turf and into the fence for 4. Brings up 50 for Bar Association's Bandipora. And Advocate A.R. Khan, kindly someone tell Adil Jan to be there till the last ball. It's up to the batter how he decides to play, and this one is wide again, and it takes them to 51. 199 runs to win of 80 bowlers. Bilal, it has been a long over, I guess, 4 or 5 wide, a couple of legitimate deliveries. As a batting unit, Advocate Erhan, they just need to understand what needs to be done, what should be the strategy of the batters there, how they need to scale the target. Next ball, and that's a good delivery again, a bit of bounce on offer, and again it has been signalled as a wide. So one more wide at the score. Problem is continuing for Gulzar Court there, as he has conceded 5 or 6 wides in this over. Let's count the number of deliveries he has bowled. He has bowled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bowlers, and with still a ball to come as he gets ready for the final time. It's 52 on board, going nearly 9 runs per over as he goes for the final time. Again it will be a wide, and you see problem is for the bowler, and clever batting there, stealing a bye as well. Wide and a bye takes the score to 54 for the loss of 2 after 5.5 overs. 6th over in progress, and the problem is for Gulzar Court there, as he is constantly bowling wides and wides, and it has been an over of at least 11 or 12 bowlers until now. He now switches round the stumps and tries, let's see if it makes any difference. A good delivery, low full toss, as the batter drills him down to long on, will get a single, and he's going to retain the strike. 6 overs gone, 55 for the loss of 2. 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 65 स्कोर कुल मिलाकर 2 विकेटों के नुकसान पर बांडीपोरा का। अभी भी 14 ओवर्स का आना बाकी और 185 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। एडवोकेट ए.आर. खान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांडीपोरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है फेरोज़ सूफ़ी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार अपनी टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए एडवोकेट सूफ़ी फेरोज़ साहब, जो कि बार एसोसिएशन बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, और 65 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया
पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए श्रीनगर स्टाफ की टीम ने 249 रन बनाए और नुमाया बल्लेबाज रहे ज़ुबैर अहमद जिन्होंने 143 रन बनाए सिर्फ 55 गेंदों का सामना करते हुए। और उनके बल्ले से बहुत सारे तकरीबन जो है 16 छक्के देखने को मिले और एक ही ओवर में लगातार 5 छक्के लगाए ज़ुबैर अहमद ने। अब यहाँ से देखना होगा, इशफाक मजीद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर और सामना करेंगे उनकी गेंद का आदिल जान। आदिल जान के लिए गेंद को खेला और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री को छू गई 4 रन के लिए। आदिल जान के बल्ले से आने वाला ये चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 69 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल जान के बल्ले से आने वाला चौका 69 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 36 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं आदिल जान। सामना करेंगे एक मरतबा फिर इशफाक मजीद की गेंद का। इशफाक मजीद पारी का 7वां ओवर फेंक रहे हैं। सामना करेंगे उनकी गेंद का आदिल जान। गेंद की एक मरतबा फिर ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, इस मरतबा गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद उनके पैड को छूने के बाद विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 15 गेंदों पर 31 रन की शराकतदारी हुई है आदिल जान और मुनीर के दरमियान, एडवोकेट मुनीर के दरमियान। गेंद की एक मरतबा फिर ऑन साइड की जानिब, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। आदिल जान के बल्ले से आने वाला एक और छक्का और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 65 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। खालिद नज्जार लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदिल जान के लिए अगली गेंद, एक मरतबा फिर हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन इस मरतबा पहले से बेहतर और गेंद 6 रन के लिए एक मरतबा फिर मैदान से बाहर जाती हुई। एक मरतबा फिर गेंद 6 रन के लिए मैदान से बाहर जाती हुई और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल जान के बल्ले से आने वाला ये दूसरा छक्का इस ओवर में लगातार दूसरा छक्का आया है आदिल जान के बल्ले से और 48 रन पर पहुंच चुके हैं 26 गेंदों का सामना करते हुए। सिर्फ एक स्ट्रोक दरकार उन्हें अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। बॉलिंग मार्क पर इशफाक मजीद, ओवर में अभी तक जो है 2 गेंदों पर मुसलसल 2 छक्के आए हैं और इसी तरह की पारी खेली थी श्रीनगर के लिए ज़ुबैर अहमद ने। अगली गेंद बैक फुट पर गए, विकेटें कवर करके गेंद को खेला, हल्के हाथों के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। रन मुकम्मल, 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 72 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल जान 49 रन पर पहुंच चुके हैं, जबकि एडवोकेट मुनीर जो है सामना करेंगे अब इशफाक मजीद के ओवर की आखिरी गेंद का। इशफाक मजीद ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामने है एडवोकेट मुनीर जिन्होंने 5 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए। गेंद की बैक फुट पर खेलने की कोशिश नाकाम, ओवर मुकम्मल। तो 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 72 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर बार एसोसिएशन बांडीपोरा का। आदिल जान 49 रन पर खेल रहे हैं जो अब स्ट्राइक पे होंगे और सिर्फ एक स्ट्रोक दरकार उन्हें अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। खुर्शीद खालिद नज्जार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तारिक भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आलाइज़ॉन आदिल जान साहब और खालिद नज्जार भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट सूफी फेरोज़ भी इस मुकाबले को इसी मैदान में देख रहे हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांडीपोरा के जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। तो अब बॉलिंग में तब्दीली, बशारत को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, टीम के सीनियर खिलाड़ी श्रीनगर स्टाफ के, और सामना करेंगे उनकी गेंद का आदिल जान जिन्हें सिर्फ 1 रन दरकार अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। गेंद को खेला, हवा में शॉट, फील्डर गेंद के नीचे एक टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाती हुई तनवीर अहमद थे फील्डर, और 50 रन जो है मुकम्मल होते हुए आदिल जान के 50 रन मुकम्मल होते हुए
50 रन बनाए 3 छक्कों और 6 चौकों की मदद से। एक मरतबा फिर आदिल जान सामना करेंगे बशारत की गेंद, बल्कि मुनीर सामना करेंगे और गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की जानिब। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका। तो 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 74 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल जान जो है वो एक मरतबा फिर आए हैं स्ट्राइक पर। खालिद नज्जार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तारिक बट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बशारत आदिल जान के लिए गेंद को खेला, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री को छू गई 4 रन के लिए। आदिल जान के बल्ले से आने वाला ये 7वां चौका। 54 रन पर पहुंच चुके हैं और स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 78 हो चुका है। आदिल जान और आदिल जान का क्रीज पर टिके रहना बांडीपोरा बार एसोसिएशन के लिए इंतहाई ज़रूरी, क्योंकि इकलौते बल्लेबाज अभी तक लय में नजर आ रहे हैं जिन्होंने मैदान के चारों अतराफ खुलकर आज़ादाना स्ट्रोक खेले। आदिल जान ने एक मरतबा फिर बशारत की गेंद का सामना करेंगे। 54 रन पर पहुंच चुके हैं और सामने है बशारत के। अगली गेंद बशारत की बैक फुट पर जाने दिया, गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों के लिए आदिल जान ने। आदिल जान बशारत की गेंद का सामना करेंगे। 23 गेंदों पर 50 रन की शराकतदारी हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। अलमायदा रोहामा और BMZ ग्रुप तरकपुरा और उनके साथ साथ मंसूर डेकोरेशन आज इस लाइव नशरियात में जो है उनका ताउन हासिल है। 78 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी है और 8वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे बशारत। इस ओवर से कुल मिलाकर 6 रन आए हैं आदिल जान के लिए। ओवर में आखिरी गेंद के साथ बशारत अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की थोड़ी नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप पर गेंद। ओवर मुकम्मल बशारत का, जिसमें 6 रन आए। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। कुल मिलाकर स्कोर है 72, 78 2 विकेटों के नुकसान पर। आदिल जान ने 54 रन बनाए 32 गेंदों का सामना करते हुए। Still trying to fight it out. Adil Jan has batted so well today for the team. He's batting nicely out there, but you know the target is still out of the reach. They still have a long way to go. They're chasing 250 runs and it's not going to be easy. It's never an easy chase. But Adil Jan is playing a handful of knock. He's playing a fantastic knock for the team. And rest of the batters yet to come, yet to bat, just need to support him neck to neck out there. Native is gone 78 for 2. They still need 172 runs to win. And Advocate A.R. Khan, Munir should take a charge. And you know, Munir just need to go for the big shots as well. With 72 bowlers, 172 to win. It's a long way to go, Advocate. And the batters will have to find those boundaries in each and every over. At least 2 or 3 boundaries they need. As the new over begins, the fresh over begins round the stumps. He goes with the first ball. Lofts that run away wide off the extra cover fielder, and the ball top spinners runs away down towards the boundary until the fielder tidies things up. Will get a couple of runs, and this time Munir tries to launch a big shot. Munir tries to go for the big shot. Gulzar starting the fresh over with 80 on board for the loss of 2. And 12 more overs to go. The asking rate at the start of the innings was 12.5. I guess this has gone up to 13 now. That's a nice looking shot. Off the back foot he goes. And he was deliberately hitting it in the air. Doesn't keep the ball down. Gets it down to back foot point boundary for 4. A boundary for Munir takes the score to 84 for the loss of 2. And they are showing some fight with the bat. They are fighting it out nicely against the bowlers. And they know that they are chasing a mammoth score. 250 is never going to be easy. But you know, take your chances there whenever you get the ball into your zone. And it is you have to make the decisions. You'll have to take a call of hitting the shots. And once again goes onside. 3 fielders are very close to each other to save the boundary on the onside. And gets a single, takes them to 85 for 2. And still a long way to go. 165 to win of 75 bowlers. 69 bowlers though.
And it has gone nearly up to 17, nearly up to 16 runs per over. With Gulzar once again to Adil Jan, goes for the big shot, clears the mid-wicket fence for 6. Onto the pad, is beautiful hands of a beautiful batter as he sends the ball sailing high into the sky for a 6. A swipe across the line and the ball carries all the way. Gets half a dozen, takes the score to 91 for the loss of 2. As during the start of the chase, I told you they could try to get up to 120, 130 in the 10 overs. Even though if you can get 120, 115, give yourself as a chance. At this stage, Adil is playing a gem. Adil is playing a masterpiece here. 91 it is. He's 60 off 33 bowlers. A brilliant cameo at the top of the order. That is what Bar Association is Bandipora need. Gulzar none for 26 in his 1.4 overs. We're in over number 9. And Adil is keeping the thrill alive. He's keeping the game alive. As Gulzar goes once again round the stumps to Adil. Goes for the big shot again. This is in the air and just over the fielder. Thought that long on is interested. He tried his level best, was jumping up in the air, but the ball just goes past his outstretched hand as there. He was stretching his right hand to pluck it out of the thin air, but the ball just beats him, wins the race and carries all the way for 6. Once again, back-to-back 6s. And Adil is keeping the hopes alive, surely keeping them alive in the game. 97 for 2. 66 of 34 bowlers. Gulzar conceding 32 until now of his 1.5 overs, and Adil just dealing in 6s. He just goes one way for 6 over mid-wicket. Now he targets that long on area and the fielder fails there. Next ball was a chance to free his arms to go for the big shot again, but this time doesn't connect at all. And it goes into the gloves of wicketkeeper. So 9 done, 97 going at 11, nearly 11 runs per over. And हुआ नहीं, थोड़ा नहीं हुआ, हो जाए ठीक, हुआ नहीं उसमें क्या बैट्समैन क्यों नहीं होता है बस. 97 for the loss of 2 it is on board. 143 to win of 66 bowlers, and nearly 14 runs per over, as advocate A.R. Khan is just mentioning that this is the best pair of the team, and both the batters are battling out their first ball, and he gets a boundary outside edge, flies down to the third man fence. And you know, when you're chasing a big score, you need runs no matter where they come from, and it always helps the team. It always helps that pressure to ease down a bit. Last couple of overs have been very handy for the batting side, and with the boundary 100 is up, it's 101 for 2. Basharat concedes a boundary of the first ball, even though it wasn't a convincing, wasn't a proper shot, and wasn't confident at all. And next ball, he was heaving it, trying to have a heave at this delivery. It gets beaten and it goes into the gloves of wicketkeeper. 101 for 2. Adil 66, and Advocate Munir, he just needs to carry the innings. He just needs to find those boundaries at regular times, and so that you can cope up with the required run rate as well. And this one is a good delivery, a good comeback after conceding a boundary of the first ball. Just shapes away and it goes into the gloves of wicketkeeper. It's 101 for 2 in over number 10 at the halfway stage of over number 10. Basharat bowling his second run for 10 is a wicketless. Those 2 wickets fell cheaply, but again, like the way Srinagar staff batted for the third wicket, the partnership which was going on, I guess the partnership of 140 runs for the team, and they're doing the same thing, replicating the same performance, like I can say in the same boat here,
Association of Bandipora 102 for the loss of 2 with 148 runs to win of remaining 10 overs. With 2 more deliveries to go, it will be Adil to face, and the ball shapes away from him and further swings, more away swings. He was trying to swing the ball, but he is nowhere near to the pitch of the ball. He is nowhere near the ball, and it goes as a wide, takes the score to 103. And really an interesting game, I could tell you. And as the next ball hits it away on the onside, has he cleared the boundary? Yes, he has. 6 more. Lofts that one away in the air and clears that mid-wicket fence quite easily. And he's keeping them alive, definitely keeping them alive. He's infusing life into this game. He is bringing that contest in the life. What a clean ball striking here we have witnessed. It's 72 of 36 bowlers, 109 for 9 with a ball to go. As down the leg side, and he just works the ball to fine leg, will get a single, keeps the strike. 110 after 10 overs, going at 11 runs per over. Now next 10 overs they need 140 runs to win. शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और मजमूई स्कोर है बांडीपोरा बार एसोसिएशन का 110। मजीद 10 ओवर्स में 140 रन चाहिए और आदिल जान ने क्या लाजवाब अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। 73 रन पर खेल रहे हैं। मैदान के चारों अतराफ उनके स्ट्रोक्स देखने को मिले। खालिद नज्जार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार जो है ज़रूर जो है हिकमत अमली तरतीब देंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी, चाहे वो बैटिंग साइड हो। क्रिकेट कप का इनेकाद किया गया और एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में टूर्नामेंट के मैचेस खेले जा रहे हैं। आज से टूर्नामेंट का बाज़ाब्ता तौर आगाज़ हुआ और आज दिन का दूसरा मुकाबला इस वक्त जारी बार एसोसिएशन बांडीपोरा और श्रीनगर स्टाफ के दरमियान। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। पानी का वक्फा इस दौरान जारी है और पानी के वक्फे के दौरान आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा कि कश्मीर बार एसोसिएशन कश्मीर का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। नाम है कश्मीर बार एसोसिएशन कप और टूर्नामेंट में 8 डिस्ट्रिक्ट्स की टीमें हिस्सा ले रही है, वकला पर मुश्तमिल टीमें। और इस वक्त श्रीनगर स्टाफ और बार एसोसिएशन बांडीपोरा के दरमियान मुकाबला जारी है। बांडीपोरा टीम को मज़ीद 10 ओवर्स में 150 रन बनाने होंगे, बल्कि 140 रन बनाने होंगे। मज़ीद 10 ओवर्स में 140 रन बनाने होंगे। और सबसे अहम बात है कि आदिल जान जो है वो क्रीज पर मौजूद है, जो अच्छी लय में नज़र आ रहे हैं। बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया आदिल जान ने। मैदान के चारों अतराफ खेलते हुए इस वक्त 73 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पानी का वक्फा मुकम्मल होता हुआ अब दोबारा से जो है मैच का आगाज़ होगा और देखना होगा आदिल जान जो है वो अब किस तरह की बल्लेबाजी का मुजाहरा करेंगे। 110 स्कोर बशारत ने 2 ओवर किए, 19 रन दिए और उनके खाते में कोई विकेट नहीं गई। 73 रन बनाए 37 गेंदों पर आदिल जान ने। मैदान के चारों अतराफ खेलते हुए कुछ बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिले। अब यहाँ से देखना होगा श्रीनगर स्टाफ की जानिब से कौन सी टीम होगी, जो कौन से गेंदबाज होंगे जो अब पारी का 11वां ओवर फेंकेंगे।
110 2 विकेटों के नुकसान पर बार एसोसिएशन बांडीपोरा का स्कोर। माजिद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर और सामना करेंगे उनकी गेंद का आदिल जान। माजिद बॉलिंग मार्क पर है, बलिया माजिद, और सामना करेंगे उनकी गेंद का आदिल जान। 11वें ओवर का आगाज़ होने को है, दूसरी पारी में 11वें ओवर का आगाज़ होने को है और 10 ओवर्स में अभी भी 140 रन चाहिए। 14 ओवर पर 14 रन पर ओवर जो है वो यहाँ पे चाहिए बार एसोसिएशन बांडीपोरा को। जब तक आदिल जान क्रीज पर है तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। और जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं आदिल जान, अगर मज़ीद 5-6 ओवर्स तक टिके रहे तो स्कोर जो है वो स्कोर कार्ड बांडीपोरा का बहुत आगे ले जा सकते हैं। बनिया माजिद बॉलिंग मार्क पर अपना पहला और पारी का 11वां ओवर फेंकेंगे। सामने है माजिद, अब बल्कि आदिल जान की गेंद माजिद की गेंद आदिल जान के लिए, गेंद को खेला, 1 रन के लिए दौड़ पड़े, शॉर्ट कवर से फील्डर गए, 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 111 है मजमूई स्कोर। माजिद बॉलिंग मार्क पर अब सामना करेंगे उनकी गेंद का एडवोकेट मुनीर के लिए ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑप्शन से बाहर, गेंद और बाहर की जानिब जाती हुई अंपायर की जानिब देखा एडवोकेट मुनीर ने, क्या गेंद को वाइड तो करार दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं आता हुआ अंपायर की जानिब से। माजिद ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। अब आदिल जान जो है वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं, सामना करेंगे माजिद की गेंद का। बनिया माजिद बॉलिंग मार्क पर अपना पहला और पारी का 11वां ओवर फेंक रहे हैं, सामना करेंगे एक मतलब फिर आदिल जान उनकी गेंद का। आदिल जान के लिए गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑफ की जानिब, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112। 11वें ओवर का खेल जारी है और इस दौरान आज़ान हो रही है। हम कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए।
Yapıyoruz bay. Number 7. Yapıyoruz. Ahtı bas. Tutuyoruz. It's called to prayer time. Azan is underway. In the meantime, a wicket has gone down. A wicket has fallen. A good partnership which was going on for Bar Association Bandipora. And it is Basharat who has struck. He has got a wicket here. 127 for 2. In over number 12. They need 123 more runs to win. And I believe they conceded way too many runs in the death overs. Last 3 overs yielding nearly 60 odd runs. And that is where Bar Association is Bandipura lagged the approach. And they could have really tried to restrict to the side under a 220, 230. But those last 3 overs, even in the last over, they conceded nearly 30 runs. And that is where they lacked the approach behind. They lacked those good death bowlers where they could have tried to save the wickets, they could have tried to save the runs and save the skin. And now 127 for 3 after 11.4 overs. Basharat getting rid of Advocate Munir there. A wicket has fallen after a long time, and the side they will take it. In the meantime, a new batter, it is Mudabbir Nazir, just walking down the centre at number 5. He will face Basharat, 1 for 24 in his 3rd over. And Khan Sajjad, Haji Munir, great personality, Hina Lon, and Advocate Adil Jan, sir, is just supporting him, providing a much needed support to Adil Jan, who has been a lone warrior, who is just standing tall out there and being a rock solid batter, 79 of just 40 bowlers, keeping the hopes alive. And I got Mudabbir Nazir just joining him out there. Need a good partnership again, at least 60-70 of just 30 odd bowlers, so that he can hunt down the target. It's a huge one. Faces the first ball, and he was trying to defend it. Gets beaten absolutely close to the edge and close to the stumps. You can see Basharat just walks back, just jogs back. 127 for 3. A partnership which was building for them, a partnership which was bringing them back into the game. Both the batters were batting with ease, batting with no pressure at all. They were carrying those odd boundaries, getting 12, 13 runs per over. And after the departure of Advocate Munir, there will be more pressure on the batters. They need a fine cameo. They need a match-defining knock from here on. At least some batter has to step up. And you need an impact player who can play an impact role. The 12 overs gone, 127 for 3. It will be Majid to continue over number 13. So 48 bowlers, 123 runs is a very tough ask. If you calculate, it is nearly nearly 15 or 16 runs per over to chase the score, as Majid goes with the first ball and hits it down to the cow corner area, and that is a brilliant catch. That is a fantastic catch, and Adil Jan has to depart. He needed a special effort to dismiss this man who was batting so well, who was hitting them big. He goes across the line, hits it in the air, but wasn't able to clear the big boundary this time, clear the longer side of the ground. And an excellent running catch, a fantastic running catch by the fielder, running from long on, and outstretched hand just grabs that one right in front of the boundary ropes, right in front of the advertising hoardings there, and sends back the man who was I can say, he was a headache for them, and he was just trying to keep his team in the hunt in the game. But this could be the big moment in for
Srinagar staff, as they have caught a wicket. They have caught a big man, a big fish departs. He is Adil Jan, who walks back after playing a gorgeous, after playing scintillating, after play, showing a stellar performance with the bat. And Aman Manhas watching us on YouTube. Well played, Advocate Adil Jan. Kudos to your innings, kudos to the determination you showed in those hard and hot conditions out there. 127 for 4 now. A time for Srinagar staff to strike back in the game. They are back into this, as Advocate Bilal is the new man, or Advocate Hilal it is. We'll have to wait and watch. Let's get you the name. Is it Advocate Bilal or Advocate Hilal? It's Advocate Bilal, walking down the centre after the departure of the danger man Adil Jan, who was playing beautifully, and faces the first ball onto the pad, works it away for a single. And Advocate A.R. Khan, it's Inzi out in the middle. Advocate Bilal. So 128 for the loss of 4. Excellent over from Bania Majid. Just one conceded. He's got a wicket. And a fantastic phase of play for Srinagar staff with the ball in hand, controlling it nicely. The required run rate is creeping up. Will be a tough one. And a fuller and longer delivery. And now they can afford to bowl right into those zones, right into that slot area. See if a mistimed shot occurs and you have a chance of a wicket, because they got the man who was hitting them well, who was timing it well today. He's back into the pavilion with 128 on board for the loss of 4 after 12.4. Has Bania Majid bowling an excellent turn. It goes to Mudabbir, and Mudabbir once again. Line is up for the big shot. Wind is onside. But there is no connection at all. See, the game has completely tilted in favour of Srinagar staff after those 2 wickets. That's how the game changes. It was hanging in balance. It was going nicely, but 2 wickets in the middle, and especially both well set batters departed. And the cricket now, it's showing its colours. It's just going in favour of Srinagar staff. They got a boundary of the final ball as well, although it wasn't a convincing one, but they will take it. Takes the score to 132. 7 overs to go. They need 118 runs to win. Nearly 17 runs per over from here on, and not gonna be easy. 17 runs scoring each and every over, so you need at least a couple of big hits in each and every over. Will be a tough ask from here on, as both the batters who were looking well, who were batting excellently well, departed. 79 for Adil Jan, and Advocate Munir also perishes while trying to fetch some big shots, while trying to fetch some big runs. कुल मिलाकर 13 ओवर के बाद 132 रन बने हैं 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बनिया माजिद की आखिरी गेंद पे चौका आता हुआ, हालांकि एक विकेट उन्होंने हासिल की है। मुदब्बिर नज़ीर के खाते में वो 4 रन गए थे। विश्वास नहीं था उस शॉट में, हालांकि बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गई थी। एडवोकेट बिलाल का खाता खुलना बाकी है। लंबा सफ़र तय ज़रूर करना है, अभी भी काफ़ी जो है सफ़र तय करना है। अगर बात करें हम बार एसोसिएशन बांडीपोरा की टीम की, अभी भी 118 रन चाहिए। सिर्फ यहाँ पे 42 गेंदों का खेल बचा है, और यहाँ से करीबन हर ओवर में 17 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और आसान तो नहीं रहने वाला है ये 17 रन हर ओवर में जोड़ना। और नए गेंदबाज को तलब किया गया है। बनिया माजिद का ओवर मुकम्मल, जिसमें उन्होंने विकेट निकाली, 5 रन खारिज किए। फ़िलहाल मुदब्बिर नज़ीर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे होंगे, एडवोकेट हिलाल होंगे स्ट्राइक पे, और लंबा सफ़र अभी भी तय करना है। 250 रनों का एक पहाड़ जैसा चेज़ कर रही है यहाँ पे टीम, और देखना होगा अब किस तरह से बल्लेबाजी होगी। क्या कोई बड़े स्ट्रोक्स लगाने में यहाँ पे बल्लेबाज कामयाब होंगे। और आपको याद दिलाएं कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को स्पॉन्सर कर रहे हैं अलमाइदा बेकरी रोहामा, मंसूर डेकोरेशंस रफ़ियाबाद और BMZ ग्रुप्स तृकपुरा।
शादी ब्याह की तकरीबात के लिए अगर आपको किसी तरह का डेकोरेशन चाहिए, आप मंसूर डेकोरेशन से रब्ता कर सकते हैं। और साथ में BMZ ग्रुप स्तरकपुर और अलमायदा बेकरी रोहमा की वसादत से ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग आप तक पहुंच रही है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद और इस बार हवा में खेला गया शॉट, वहाँ खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेंगे। उमर को बुलाया गया था और पहली गेंद पे उन्होंने विकेट निकाल के दिया है। एडवोकेट बिलाल, जिसे इंजी के नाम से जाना गया था कमेंट सेक्शन में, वो वापस जा रहे हैं। कैच थमाया उन्होंने लॉन्ग ऑन पे, कोई गलती नहीं की वहाँ पे खिलाड़ी ने। और इस तरह से 5वां झटका, 5वीं विकेट गिरी है यहाँ पे बार एसोसिएशन बांडीपोरा की टीम की। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, इसको घसीट के मारना चाहते थे। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराने के बाद सीधा वहाँ पे खिलाड़ी के हाथों में और उनका दूसरा अच्छा कैच। और इस तरह से 5वां झटका लगता हुआ अगली गेंद के साथ तैयार। फिर से बड़ा स्ट्रोक, गेंद को गैप में निकाला है 2 खिलाड़ियों के बीच में से और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और 4 रन खाते में जुड़ते हुए स्कोर इन 4 रनों की मदद से 136, 5 विकेट के नुकसान पे 114 रनों की अभी भी दरकार है मुकाबला जीतने के लिए। और आसान नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ से 40 गेंदों का खेल बचा है और आपके 5 खिलाड़ी वापस डगआउट गए। हालांकि आदिल जान का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आदिल जान जिन्होंने कुल मिलाकर 79 रनों की शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए, लेकिन वहाँ पे जितनी तारीफ की जाए खिलाड़ी की, फील्डर की, उतनी कम। एक गजब का कैच उन्होंने लिया था दौड़ते हुए अपने बाईं ओर और बाउंड्री लाइन के करीब वो कैच लपकने में कामयाब हुए थे। फिलहाल उमर अगली गेंद के साथ सामना करेंगे मीर शबीर। उनकी गेंद का फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया शबीर ने, गेंद को भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके और यहाँ से एक अटैकिंग सोच अपनाए हुए है बल्लेबाज। जानते हैं कि आते ही बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, आते ही यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, तभी जाकर आप इस मुकाबले में बने रहेंगे। फ्लाइटेड गेंद थी और इस गेंद को सही नसीहत दी बल्लेबाज ने, भेजा मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। अगली गेंद और फिर से ऑन साइड एरिया को तलाश रहे हैं। हालांकि 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात किए गए हैं बाउंड्री को रोकने के लिए, लेकिन इस बार कोई मेल नहीं गेंद का बल्ले के साथ, डॉट बॉल साबित होती हुई। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी और सही ढंग से टाइम नहीं कर पाए। वजह ये कि ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश की। कोशिश ये करें कि आप टाइम करें अपने शॉट्स को, ज़्यादा ज़ोर से मारने की कोशिश ना करें, जिसके चलते वो बल्लेबाज का शेप है, अपनी शेप खो दी थी बल्लेबाज ने और अंदरूनी किनारा लिया था गेंद ने। 1 रन हासिल होता हुआ आखिरी गेंद का आना बाकी 141, 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार स्वीप किया काफ़ी तेज़ और उतनी ही शानदार फील्डिंग वहाँ पे खिलाड़ी की। 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, अच्छा एफर्ट और वहाँ पे 2 रन हासिल होते हुए 14 ओवर्स के बाद 143, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 6 ओवर्स का खेल बचा है। 107 रन चाहिए, करीबन 18 की औसत से रन्स बनाने हैं यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए और काफ़ी मुश्किल वक्त है यहाँ पे बार एसोसिएशन बांडीपोरा के लिए। अगर ये मुकाबला जीतना है तो यहाँ से हर ओवर में करीबन 2-2 छक्के लगा के मुकाबले में वापसी करनी होगी। हालांकि ऐसा कौन सा बल्लेबाज होगा जो एक ऐसा नॉक खेलेगा, जो एक ऐसी पारी खेलेंगे कि यहाँ से गेंदबाजों को दबाव में लाना होगा और टीम को वापसी करानी होगी। ऐसा यहाँ पे उसके लिए कड़ी मेहनत, उसके लिए बड़े स्ट्रोक्स चाहिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो 5 विकेट गए हैं वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे बार एसोसिएशन बांडीपोरा की टीम को। May I remind you once again, they batted first and have posted a mammoth score on board. They have 249 runs, and at this stage it's a short pause in the game. 143 for 5. Bar Associations Bandipora with Mudabbir Mir Shabir batting on 9 of 4. Couple of fours to him. Mudabbir Nazir on 6 of 6 run a ball for him. You will have to find those boundaries at regular times, at regular intervals, and in each and every over. If we calculate 18 runs per over, so we need couple of 6s and 4s to limit, to level the run rate, to level
the required run rate as well. It won't be easy. It's it's a very hard nut to crack. It's not everyone's cup of tea in the midst of this heat, and really tough conditions for the batters, even though for bowlers as well. Don't forget them. And scoring 18 runs in a tough condition is not going to be an easy one. And Srinagar side, they will be a happier side at this stage. In the meantime, Bania Majid goes with the first ball, helps it round the corner, finds the gap, goes down to the boundary, starts that over with a 4. Majid bowling a short delivery, and the batter just uses the pace of the bowler. He's been clever, just nicely works it on the onside, finds the gap, and that is more important. Playing the shot, you just find those gaps, runs will come by, and gets a boundary. Takes the score to 147 for 5. 35 bowlers to go. They need 103 to win. Still a long way to go. Still they have a mountain to climb. It looks like a very tough chase for Bandipora, but you never know in cricket. You expect those unexpected things. You expect twisters in this game. And he starts the fresh over with a boundary. Mir Shabir moves to 13 of just 5. Target is 250. And for me, where did they miss the game? Bar associations when they were bowling in the last 3 years was more than 60 runs were scored, and they could have been a happier side had they restricted the side under 220, under 230. They could have given themselves a chance of scoring, of chasing the score down. As Bania Majid concedes the boundary, 2.1 overs, 1 for 16. He's got a name in the wicket column. In the wickets column, he's got a wicket I guess he got the wicket of Adil Jan, who was batting well, who batted sensibly for the team, and he kept the hopes alive of Bar Association's Bandipora. And reminding you once again, it's a Kashmir Bar Association Cricket Cup being played at MET Sports Field. Couple of days before a blockbuster of a tournament, South Cup Sopur, was conducted here. And next ball again runs it away. Beautiful execution by the batter, gets it into the fence for 4. Back-to-back boundaries takes the score to 151 for the loss of 5. An excellent phase going on now. Runs coming in boundaries, 2 of them have been scored, and it's 151 for the loss of 5. $151 for the loss of 5 it is. As Bania Majid conceding back-to-back boundaries, 2 fours of 2 balls. And Shabir just means business out there. He's not going to waste any time. As the next ball gets the top edge up in the air, but will definitely land between the 2 fielders. And in the meantime, the batters crossed for a single. He was interested in stealing the second, but he was denied. He was refusing. The striker Sagar Lia, I guess he scored 25 runs. Munir, Advocate Munir, came in at number 4, played a good cameo, stitched a good partnership with Adil Jan of 100 runs. To those 2 quick wickets mean that Srinagar staff, they have a good hold over the game, strong comeback in this game. Next ball tries to go on the onside. The ball swings away and beats the batter who was trying to go for the drive, and it goes into the gloves of wicketkeeper. A dot ball here as Bania Majid goes for the final time. This has been swiped on the onside in the gap. 3rd boundary of the over, 3rd 4 of the over. 5 balls have yielded 13 runs, and that is what they need to do. 156, 94 runs to win now, and 31 bowlers to go. It's a tough chase, there is no doubt about that, but I can say Bar Association is Bandipora, they are absolutely fighting it.
and they are leaving no stone unturned, and the batters fighting it out, giving it a tough fight, making it a tough competition. He goes for the final time. Full toss down the leg, and both the batters will steal a single, and overthrows conceded, and they steal one more run. After 15 overs, the score on board is 158. 92 runs to win of 30 bowlers. 92 runs to win of 30 bowlers, 5 overs, and Samir Ahmed Butt just sending in love for Mir Shabir there. Just 5 more overs to go now. 5 more left in the innings. After 15 overs, they have 158 runs on board. I could say very never number 60 and 158 for the loss of 5. Still 92 runs away to register a victory with just 29 bowlers left. In the meantime, tries to go onside, go for the big shot, but this time doesn't connect at all. Two back-to-back dot deliveries. It's a tough ask from here on. Scoring 92 runs out of 28 bowlers is not going to be easy. It is not an easy task with 5 wickets already down, with 5 batters already resting in the dugout. And next ball is in the air, doesn't time it well, gets it high on the bat, and the ball trickles down to the cover. The batters steal a single. One more run added to the tally takes them to 159 for 5. The singles are not going to do the job for you. You need big overs, you need overs which can get you at least 20 odd runs in each and every one. This is up in the air, could be wicket number 6, and it is. Wicketkeeper takes a good running catch. One more wicket falls, 6th one goes down, and it's 159 for 6. शुक्रिया फिरदौस। तो कुल मिलाकर जो है 6 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं और रन्स यहां पे बोर्ड पे लगे हैं बार एसोसिएशन बांडीपोरा के जानिब से 159 रन्स। अभी भी 90 रन्स 91 रन्स चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि कुल मिलाकर ये 16वें ओवर का खेल जारी है और 27 गेंदों का खेल बाकी है, बल्कि 26 गेंदों का खेल बाकी है। 26 गेंदें और रन्स दरकार मुकाबला जीतने के लिए। 91 मंजिल बहुत दूर। यहाँ पर मीर शब्बीर और मुदब्बिर नज़ीर आए हैं नए बल्लेबाज। हवा में खेला गया स्ट्रोक फील्डर गेंद के नीचे और कॉट एंड बोल्ड हुए हैं मुदब्बिर नज़ीर। मुदब्बिर नज़ीर जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए एक और विकेट गिरती हुई ये 7वीं विकेट गिरी है 159 के मजमूई स्कोर पर। मुदब्बिर नज़ीर कॉट एंड बोल्ड हुए हैं और उन्हें जो है उनकी विकेट हासिल हुई यहाँ पर गेंदबाज तनवीर अहमद को। कुल मिलाकर तनवीर अहमद ने इस ओवर में 2 विकेटें हासिल की है। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ये बार एसोसिएशन बांडीपोरा की टीम अब इस मुकाबले से पिछड़ती हुई। तनवीर अहमद इस ओवर में 2 विकेटें हासिल की है। कुल मिलाकर तनवीर अहमद ने 4 विकेटें हासिल की 2.5 ओवर्स में 11 रन देकर। बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाज गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए तनवीर अहमद। समीर अहमद भट्ट सागर लिया हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो देखना होगा मीर शब्बीर का साथ निभाने के लिए सद्दाम भट्ट आए हैं नए बल्लेबाज। सादम भट्ट आए हैं नए बल्लेबाज और सामना करेंगे तनवीर अहमद की गेंद का। क्या तनवीर अहमद हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे? यहाँ जो है उनके पास मौका हैट्रिक हासिल करने का। तनवीर अहमद अभी तक 4 विकेटें हासिल की, ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे गेंद की और गेंद लेग स्टंप से बाहर। देखना होगा क्या वाइड बॉल का इशारा, अच्छी विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हुए कुल मिलाकर ओवर मुकम्मल होता हुआ तो तनवीर अहमद का कामयाब ओवर मुकम्मल हुआ है, जिसमें सिर्फ उन्होंने 1 रन दिया और 2 विकेटें हासिल की। तो 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 159 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। बार एसोसिएशन बांडीपोरा को मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 91 रन चाहिए, 24 गेंदों का खेल बाकी है। ये कश्मीर बार एसोसिएशन कप का एक अहम मुकाबला इस वक्त जारी। श्रीनगर स्टाफ और इस मरतबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब, फील्डर मौजूद, उसके अलग बाउंड्री पर हल्की सी मिस फील्डिंग, लेकिन बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद को रोकने में कामयाब। इस दौरान 1 रन बनाने का दूसरे रन के लिए गालिबन गए थे, लेकिन 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 160 हो चुका है। फुरकान हमारे साथ जुड़े हैं, समीर अहमद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मीर शब्बीर और सादम भट्ट जो है इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बैकफुट पर, बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों से छूट गई। यहाँ मौका मिला था एक और विकेट हासिल करने का, लेकिन गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों से छूट गई। और आपको रीप्ले में दिखाना चाहेंगे, बिल्कुल साफ तरीके से जो है बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी, लेकिन वहाँ पर कैच लेने में नाकाम रहे। बशारत अगली गेंद के साथ अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। बशारत गेंद को खेल दिया, उस और कोई फील्डर, 2 फील्डरों के दरमियान से होती हुई गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। सादम भट्ट के बल्ले से आने वाला ये चौका और इन 4 रन के साथ अपना खाता खोला बल्लेबाज ने, और स्कोर जो है 164 बढ़ता हुआ। अभी भी मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 86 रन, मंजिल बहुत दूर। और कुल मिलाकर कहा जाए कि श्रीनगर की टीम जिन्होंने पहले ही पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था 250 रन का, वो इस मुकाबले में तकरीबन जो है जीत के बिल्कुल करीब है और हावी नज़र आती हुई इब्तिदा से ही बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टीम पर। अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की बहुत से बाहर गेंद को खेल दिया है, उस और फील्डर कोई तैनात नहीं, क्या रोकने में कामयाब होंगे? जी नहीं, और गेंद बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। तो 4 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 168 हो चुका है। ये हमारे साथ फयाज सूफ़ी जुड़े हैं बांडीपोरा से, सूफ़ीज़ ऑफिशियल पेज से, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में, शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और मिड विकेट से गए थे, शॉट मिड विकेट से गेंद को कैच लेने की सूरत में, लेकिन गेंद तक पहुंच भी गए, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और 1 रन का इजाफा। अब दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं दोनों बल्लेबाज और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर 170, अभी भी 80 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। कुल मिलाकर 20 गेंदों का खेल बाकी, 20 गेंदें, रन दरकार 80। बार एसोसिएशन बांडीपोरा को मुकाबला जीतने के लिए मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल ये मुकाबला जो है तकरीबन बांडीपोरा के हाथ से निकलता हुआ। अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से और स्कोर बढ़ता हुआ एक इजाफी रन के साथ 172 हो चुका है। 7 विकेटों के नुकसान पर यह 17वें ओवर का खेल जारी। बशारत अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ 3.5 ओवर में 31 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। इस मरतबा हवा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश में, क्या बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोकने में कामयाब होंगे? जी हाँ, इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 173। 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 17 ओवर्स का खेल मुकम्मल और
174 है स्कोर, 18 गेंदों का खेल बाकी है और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 76 रन चाहिए, 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। फुरकान हमारे साथ जुड़े हैं, समीर अहमद भट्ट जुड़े हैं, सूफीज़ ऑफिशियल पेज से हमारे साथ जुड़े हैं फयाज सूफी बानीपुरा से। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनवीर अहमद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, जिन्होंने इससे पहले 3 ओवर किए, 11 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। तनवीर अगली गेंद के साथ गेंद की, इस मरतबा गेंद को खेल दिया, फील्डर उस ओर मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका गया। इस दौरान 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 75 हो चुका है। 175, 7 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर का खेल जारी। तनवीर अहमद अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। 3.1 ओवर में कुल मिलाकर जो है 12 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। बेहतरीन अंदाज से जो है गेंदबाजी का मुजाहरा किया तनवीर अहमद ने और नफ़ी तुली गेंदबाजी का मुजाहरा श्रीनगर स्टाफ के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, बैकफुट पर गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहता, गेंद के बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गली की जानिब गई और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ अब 176, 7 विकेटों के नुकसान पर बार एसोसिएशन बानीपोरा का। तनवीर अहमद ओवर में अगली गेंद के साथ सादम भट्ट जो है सामना करेंगे। इस मरतबा गेंद को खेल दिया, फील्डर गली में मौजूद लेकिन रन के लिए दौड़ पड़े और रन मुकम्मल होता हुआ। वहां पर थ्रो लगाया था लेकिन डायरेक्ट हिट लग जाती तब नजदीकी मामला बन सकता था। अब यहां से जो है तनवीर अहमद बॉलिंग मार्क की जानिब वापस जाते हुए। तनवीर अहमद अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, गेंद की लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 178, 72 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और गेंदें बाकी है कुल मिलाकर 15 गेंदें, 72 रन। मीर शब्बीर 23 रन पर खेल रहे हैं, सामना करेंगे। इस मरतबा गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, थर्ड मैन मौजूद और एक टप्पा खाने के बाद गेंद जो है उनके हाथ में जाती हुई। हालांकि अगर कोशिश करते तो गालिबन कैच ले पाते लेकिन अपनी जगह जो है खड़े रहे और गेंद के आने का इंतजार किया। 179, 7 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 71 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए और 14 गेंदों का खेल बाकी। 14 गेंदें, 71 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद के साथ तनवीर अहमद अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। ओवर की 5वीं गेंद, उछाल लेती हुई गेंद और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 18वें ओवर का खेल जारी है और अब 18वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे। 13 गेंदें, रन दरकार 71 मुकाबला जीतने के लिए। 71 रन चाहिए, 13 गेंदों का खेल बाकी। तनवीर अहमद अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ गेंद की और अच्छी गेंद। तनवीर अहमद का कोटा मुकम्मल, 4 ओवर किए, 16 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। अभी तक के कामयाब गेंदबाज। 179 स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान पर 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल। उमर आए हैं अब बॉलिंग मार्क पर जो कि पारी का 19वां ओवर फेंकेंगे। सामना करेंगे उनकी गेंद का मीर शब्बीर। Mathematically, the game is over for Bar Association's Bandipora. They were fighting it out, but were chasing out of reach target. 250 is what they were chasing, and now after 18 overs, they have 179 on board. The first ball of the fresh over, the batter rocks back, smashes it hard down to long off, and happy with the single there. And Samir Ahmed sending a love for Saddam. And then Sophie's official watching us. Thank you very much, Sophie's official, for enjoying the game, enjoying the live broadcast, welcoming you to the live stream. And now he comes down the track, doesn't time it, it's up in the air, but follows in no man's land, follows between the two fielders, one charging from extra cover, one from long off. And the batters have completed a single, even though just 10 ballers left and they need more than nearly 70 runs to win. Again, slower through the air, bit wider. As you can see, the batter is demanding a wide there, but umpire says no. He declares it a legitimate ball. So mathematically,
even though they are already out of the contest, cannot win the game even if they can hit 9 sixes out of those 9 bowlers. 69 runs to win of 9 deliveries. An impossible thing to achieve, impossible thing to get, as 3 more bowlers left in the penultimate over, and those last 3 or 4 overs of the first innings have costed Bar Association's Bandipora the game, and this one has been lofted over mid-wicket fence for a 6, and need more of these, but still cannot scale the target. Need those 6s to boost the confidence to finish on a high, but still they are not going to win the game. Nobody can score those 70 runs out of just 9 bowlers, and they're just enjoying and entertaining themselves out there with those big shots. And has been stumped. We'll have to wait and watch. That is the signal of the umpire. He was trying to loft him again, was trying to go for the big shot. It doesn't connect and goes into the gloves of wicketkeeper. Just 7 bowlers left now. We can say just formalities left in the game. This one goes down to long on, an easy single, and he's going to retain the strike. He's going to keep the strike, and he has been run out in the meantime. He was trying to steal the second. Wicketkeeper dislodges the bails, and he disturbs the stumps as 1 more wicket falls on 188 for the loss of 8. So 6 bowlers left. As I said, just formalities being completed in the game, and all we can say congratulations in advance for Srinagar staff, and they're going to register a victory here. Muhammad Yusuf watching the game, who is going to bowl the final. I guess it is Rishi going to bowl, Fida Rishi. We'll have to wait to send down those final 6 deliveries and to put a final nail in the coffin for Bar Association Bandipora, and given away way too many runs. They will be kicking themselves at this stage. This was a good batting surface, and up to 200 could have been chased down by them. At this stage they are at 188, and they given away way too many runs. 250 was not going to be easy, and they tried their level best, especially Adil Jan and now Shabir and Saddam, but both the batters. And Rishi starts the first ball of the fresh over, thick outside edge, and it goes down to the boundary for 4. 4 more runs have been added, and it takes the score to 182. 192 it is. Just 5 more deliveries left to remember. Once again, at the fag end of the game, we have a time here to discuss about this. This is Kashmir Bar Association Cricket Tournament, the first Kashmir Bar Association Cricket Tournament where the lawyers and advocates of the valley are playing, creating and building those teams and just entertaining in those holidays. It was Sunday today, and we have 2 games. Just 8 teams are participating, and all the matches will be live broadcasted on the official handle of Global News Network and JK Sports Discovery on YouTube. And a single takes them to 194. Just 3 bowlers remaining, or just 2 bowlers, just 4 bowlers remaining now. And I can say, as I said, just formalities being completed in the game now. Nothing left for Bar Association Bandipora, and side of Srinagar staff, they have been exceedingly well today. The way they bowled, the way they batted, especially the batting was a hot topic. Zubair smashing the bowlers to all corners of the ground. He caught a record-breaking 100 today, 143, and smashed as many as 14 sixes, I guess. And he was the man who got consecutive 5 sixes of 5 bowlers today, and that was a hallmark. And then Rishi Fida as well. This is in the air and has been completed at long on. 1 more wicket falls. I guess the game is over. We'll have to wait and watch. They have been all out. Is it so? Yes, the team is all out, and Srinagar staff have won this game quite comprehensively. They have registered a crushing win here. They have registered a thumping win against Bar Association's Bandipora. Many congratulations to the side. They played like a champion team, and hard luck for Bar Association's Bandipora. Come and try next time. And it wasn't your day at the end. Srinagar staff have carried the day. They have gone over the line,
and they are into the next round. This is it for the day, dear viewers. Thank you very much staying connected with us, and join you some other places of the valley. And until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.